Good evening, sir. And I would be now just wanted to know like total participants, how many are there in this batch? Sir, there are 59 students. So in a couple of minutes, they are all are covered, sir. And did you all get the virtual machine setups? Did you all get virtual machine setup? I had shared with the CDAC department. Yes, sir. Okay, so you don't get the lab setup? No, sir. Okay. So we will set up in tomorrow. In tomorrow we will have lab section in first half. In that session we will set. But you don't have the link, right? How will you download the files? We will get it today. Let me share it. I'll share it from my side, whether you get it or not. I'll be sharing it from my side. I'm in the sir in the chat section. Ma'am have written that we have different setup. In the chat they have written something. Oh, so you're not going to use the same setup, right? So the labs are provided by your company, like by your institution, CDAC. Yes, yes, sir. Okay, no issues. So that reduces my, lab headache. So is Vinita ma'am going to chip in like for introduction, or can we like start? I don't know. Today's the first day. Yes, sir. Hi, Sunbeam. Hi, good evening, ma'am. How are you? Actually, I'm in between of the meeting. You were saying about the setup. Actually, we have some different setup for these students. We have bought one software platform for them, and tomorrow we'll be having the first demo session for them. So we'll be using So that all the program will be installed, right? Hadoop, Hive. Yeah. Everything is there. We have got one account for you also. We'll be sharing the credentials to you by Okay, tomorrow. ma'am. Same. That would be great because then I can be on the same par with them. Yeah. Yes, Okay. sir, you can continue because I'm in meeting with Johnson, sir. Okay, fine. No sure. Thank you, ma'am. So good evening, guys. Welcome to the batch on big data. So let me just share my screen. So the first thing we have to understand that we are going to go through this courseware. You must have seen the outline, all of you. Introduction to big data. We have this first thing we need to understand what exactly big data is all about. And though I've covered some of them in my demo session, but today I'll be giving you some examples also how we process big data. So there are technologies like Hadoop, Airflow, Hive, HBase, and Spark. There are many technologies actually, but we will be focusing on these technologies as mentioned in your courseware outline. And regarding your entire like everyday session, we have a 3.5 hour session with we have a 4 hour session, but half an hour is a break in between. So we can have a dinner break, whatever time it suits you, all of you. And then we can continue till 10 o'clock. Regarding communication, you can communicate with me in any language, Hindi, English. And let me know if anything is not understood by you during the training. I can repeat as many times. So don't worry about the repetitive part that I would be repeating 2 times, 3 times. Till it is not clear to all of you, I can repeat because it's a new technology. It takes a little while to understand. Yes, sir. So just be frank, treat me like your elder brother, and just ask me freely whatever you want to know about the topic. So don't hesitate, just be frank, open. Could be puchna hai. It can be a very stupid question also, but don't mind asking that question. Because hoga kya, jab tak aapko clarity nahi hogi, you cannot go to the next level. And then you will not be able to understand even the next level programs, what is happening in the next level. So if the first level is not understood, you will not be able to understand the remaining levels as we proceed.
So it's very important that we go slow. We understand every topic clearly. We have ample time. And we learn each and every technology in depth, so that tomorrow when you go for your job, you are ready for the work. That is the idea here, so that you can straight away jump to your job positions. Okay, all set. Let's get started. So first thing, we all need to know what is big data analytics, because that is what we are all here for. And in the last demo, I discussed what is big data actually. So before that, we can also understand what types of data we are using nowadays in the industry. We are using all types of data, structured data, and semi-structured, unstructured data. So tell me, your business data is stored in which format mostly? Structural data. Structured data, right? So people are using tables, databases like Oracle databases or SQL Server. There are many different databases. Small companies may be using MySQL database. So you must have worked on MySQL, right? All of you. आप लोगों ने MySQL पे काम किया होगा. Postgres. Sorry? We work on Postgres, sir. अच्छा, Postgres पे काम किया. Yes, sir. But the commands are similar, right? Whether Yes, you're sir. working Yes, on sir, yes. MySQL or Postgres, Almost. commands are very similar. Select queries, SQL queries you write. So it's very easy to store data in structured and retrieve data by running SQL queries. But this type of data is only around 20% in today's time in the world. If you took the entire data composition, structured data comprises only 20%. Most of the data is being generated in this unstructured category, around 70 to 75%. And the reason you all know, it is because of social media platforms. So we all are using social media heavily today, whether it is Twitter, Facebook, WhatsApp, emails, right? All these platforms which we are using very, very heavily. And because of digitalization, we are able to use this more through our mobiles. So we are generating more and more data today through these platforms. So the amount of data we are generating is very, very huge in these unstructured data category. Now, any analysis you do in today's time, if you do any analysis, like if I want to do customer analysis or product analysis, I want a complete view. Basically, we call it 360-degree view. Pura view chahiye uska. I want a complete view. I should not lose out any data as input data. Suppose you take only structured data and you try to get some insight about customer or product. But that will not work in today's time because a lot of data is being generated through social media. Now tell me, social media data platform pe what type of data we are generating? Unstructured. But what is that data? What is that information which we are generating? Video. Images. Audio. But what is that information telling us basically? ठीक है, images है, videos Personal है. information. Like So we are getting information about clients and their likes and dislikes. Lifestyles. हाँ, lifestyles, likes, dislikes. कोई अगर vacation पे जाएगा तो अपने photos upload करेगा. So you come to know that okay, that person has gone to XYZ location. Anybody watched a movie तो वो अपने movie के बारे में discuss करेगा. Somebody bought a product, वो product के बारे में discuss करेगा. Somebody went for a outing, he or she will discuss about that. He will share pictures. So in a way, you are getting live information about different customers and what activities they are doing. That is very important because you are sharing in good faith, but this data can be used by a lot of companies. So they understand your likes and dislikes, your habits, your whatever you want to do in life. So they understand basically the demographic choices of the current generation. और उसके बाद क्या करते हैं these companies, when they collect the data, they analyze, they try to market those products or those categories of segment in those people.
So you must have observed that many times you get recommendations on your mobile कि यहाँ जाओगे इतना लोगे तो इतना आपको फ्री मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, if you buy this product you get this much discount. Do you get such recommendations on your cell or on your different applications? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. So how do Yes. you get, because you are not, they have analyzed your data और उस analyze करने के बाद आपको target किया जाता है. Because all these data companies which we are talking about, Twitter, Facebook, they are giving you free services. Can you imagine how these companies can give you free services for Twitter, Facebook, WhatsApp? After all, they must be spending billions of dollars, right, in storing data, deploying manpower, servers across the world. It is not free of cost when they are storing data. So amount of money they are spending to just store data and retrieve data for all of you. It's not easy. So what they're doing, they are selling this information by processing it. Process करने के बाद they are giving the information to the right end user. So end user get customer insight, product insight, they get behavioral patterns of different customers. And through that patterns, they can decide their own marketing strategy, how to sell different products in different categories of people in different areas. So they know the target now. It becomes very easy for these companies to sell their products or services once they understand the target audience. So this is all coming from where? From your platform like social media. So in a nutshell, if I'm running a company, जैसे मैं अपनी कोई company चला रहा हूँ, my business data will be in tables, right? But मेरे अपने Twitter handle भी रहेंगे, Facebook page का post भी रहेगा, people will be sending me. So they would be sending some complaints. किसी को product पसंद नहीं आया तो वो भेजेगा Facebook पे या Twitter पे that your product is not up to the mark. So whenever I need to do any analysis on my own data, I cannot ignore social media data. In today's time, nobody can ignore data coming from social media platform. Can we ignore it? Tell me. Can we avoid it? Not possible. Because if you're avoiding it, if you're ignoring it, it is your peril that आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं. Because you're not taking complete data. You're not taking 360-degree view. Suppose there are 100 feedbacks given to you. उस 100 में से 70 gave you good feedback and 30 gave you negative or average. So that means there are some people who are not liking your product और उनको आपके product में कोई खामी नजर आ रही है, कोई कमी नजर आ रही है. So that product needs to be modified or increase the level of satisfaction. So that what you can get real-time information. So पहले क्या होता था? Used to get information after few days, few weeks, few months. People used to react. कई लोग तो react भी नहीं कर पाते थे because they don't have any medium. But now people have medium. Immediately they can pick up the phone. They can send you the message. Within seconds you'll be getting the feedback. अगर कोई product आपका नहीं चला और fail हो गया उनके as per the expectation. So immediately you will be taking some action. You will be fixing that issue, talking to that customer. Otherwise क्या होगा? Customer को आपने नहीं cater किया और उसको नहीं सुना तो that customer will give a bad review. Bad review से आपकी market गिरेगी. Your brand value will come down. So that is what we are doing today. In today's time, we need to manipulate or we need to manage all type of data. This is a very important word, all type of data, all data. Few years back, we were only targeting structured data. ठीक है, structured data use किया, analysis किया, काम हो गया. But now we cannot do that. We need to target all data as much as possible. कहाँ से भी जहाँ से भी data generate होता है, we need to target that. Now the challenges come when we target all data. ठीक है, we have decided कि all data we should target. अब इसमें challenge बहुत सारे challenge आएंगे. Can you name some challenges here? क्या क्या तकलीफें आएंगी अपने को? बहुत ज़्यादा जीबीज होगा, मेगा टेराबाइट्स. Data volume will be very very big. Volume बहुत बढ़ जाएगा आपका. क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होते हैं, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वॉल्यूम इज वेरी बिग.
बहुत सारे unnecessary items होंगे उसको filter करना. हाँ, so maybe you will be getting lot of unwanted data, you can say, जिसको we don't need, but वो साथ में आएगा आपके, because it's a part of your data set. So unwanted data volume will be very big. Anything else you can think of? Missing data. हाँ, missing data, क्योंकि it is unreliable data, so we cannot guarantee कि वो data pure हो, or maybe we can use it directly. So it will be some missing values will be there. Because data is unreliable. बहुत जगह से आप लोग data pick up कर रहे हो, that is unreliable. It's not clean. We cannot use it as it is. और सबसे बड़ी बात, data will become complex. Why complex? Because now you're dealing with structured data and unstructured data both in a single platform. Up till now, we were learning how to process only structured data through RDBMS. Now, एक ही platform में we need to process both the data sets, structured and unstructured. So that is going to be another big challenge, क्योंकि data आपका भी complex हो गया है. And let me tell you, social media data में भी बहुत तरह के different files होते हैं, formats होते हैं. Like Twitter is Avro, maybe emails would be text file, WhatsApp would be text, Facebook maybe another text, or maybe having images. So you are combining and making a big complex data. In short, I would say it's a khichdi of data where you don't know what to do with that data. So each part you need to separate out and you need to process it separately. So it's not easy to process complex data on a single platform. So we cannot process this data on any RDBMS. RDBMS pay, can we process this data on RDBMS platform if we have structured and unstructured both? No. Postgres पे अगर आप unstructured data process किया है आपने अभी तक किसी ने? नहीं. No, sir. हाँ, तो पहले आपको उसको structure बनाना पड़ेगा through Java code, और बाद में उसको import करना पड़ेगा Excel format में, और बाद में Excel file को you can import as a table. So बहुत लंबा process है वो, converting of unstructured data to structured data. Through Java program or through C program, you have to first convert your text data into some sort of a structured. बाद में you put it in some CSV file or Excel file, और वहां से you can import into your table format. उसके बाद we can use it. So this type of data, when we talk complex data and large data, this is what we call big data. Big data का definition है large and complex data, which cannot be processed on a single platform. You cannot process this type of data on a single machine or a single platform. It is next to impossible, because if I give you maybe 100 TB data, 100 TB data को आप एक machine पे कैसे process करेंगे? Not possible. And the best part is that this data will be growing. हर time ये data पहले से ज़्यादा बढ़ेगा. It will grow. Today it is 100 TB. कल it can become 120 TB, 130 TB. तो प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली. So we need a system where we can store as much data, जितना भी data generate होता है, we can store it very easily. So that is a definition of big data. So big data means any data which is large and complex, which can become very difficult in processing them using your standard data processing application. And what is the role of a data? Data का असली काम क्या होता है? Why do we store data? Tell me. To generate information. Information or maybe some insight. The right word is insight. कुछ ऐसा data में से extract करना है. We have to extract such information or such insight that can become really helpful for the company. That is what we call data value. We are creating value for our data. So it is not like report. कोई report नहीं बना रहे हैं कि जैसे data लिया और उसका report generate कर दिया, which customer and how many orders placed. That is not we are intending here. This is not a reporting mechanism. Normally SQL में क्या होता है? We can generate reports. ठीक है, how many people are placing orders. So that is information, but at a lower level. Here we are trying to find out something deeper.
something deeper which can really make changes or bring differences in your company. That is why people are saying data is now commodity. It is like oil and gold. They are comparing data with oil and gold. Why? Because once you use your data to a larger level and you do a deeper analysis, it can find out or it can give you such valuable information, insights that can help you to turn around your company. अगर आपकी कंपनी लॉस में चल रही है, it can really make you in a profit. Because ऐसी चीजें वो ढूंढ के लाएगा आपका डेटा, that you will be start implementing those things and you can see the difference happening in your organization. That is what we call analysis, not reports. Report, anybody can draw reports. That is not a big deal. और उसके लिए आपको you have to deep dive. You have to write many applications. उसके लिए आपको डेटा का मतलब you need to know the data very well. उसकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए. What data is all about. You all know that data speaks to you. Have you ever thought about that? जब आप डेटा को देखते हो, डेटा आपसे बात करता है. Have you noticed that? Just try to look at it in that way. Whenever you open any file, the data starts talking to you. So you need to understand what data is saying to you. The moment you try to understand what data is telling you about itself, you'll be able to understand that data more better. And then you know how to use that data. So understanding of data is the first important objective. Any analysis, any analyst you are working on, you have to first understand what is data all about. Data के बारे में क्या-क्या इसमें है information, and you need to understand that data very well. Then only you can take best advantage of the data set. So that is the objective of any data. So the same objective remains for big data also. Just because it has become, the objective will not change. Even the smaller data has the same objective. We are storing data and we are using that data for analysis, and we would be taking that data to a higher level to understand. Now, in the last class, I discussed some important 4 V's, and most of you must be there. So I'll just recap this fast if anybody was absent on that day. So V stand for, first V stand for volume. That is the size of data we are talking about. Just now we spoke about volume, right? Somebody told me that if you have high volume data, so that can be called, that is a bigger challenge. How to store terabytes and terabytes of data on a single machine? Not possible. So certainly we need to we need a different type of storage system. We cannot use normal platform like, simple machines like desktop. उसके ऊपर we can store this much amount of data, not possible. So what type of system we will be using? I will be discussing that today. Then variety means different forms of data. So any data which is coming in different forms, structured, unstructured. And you know that very well, data is not in uniform today. There are so many formats, multiple formats are there, even in unstructured data. So it's not easy that you write one piece of code और उससे काम चलेगा नहीं. Every format you need to treat separately, and then you have to accumulate उसको बाद में इकट्ठा करके last में you need to write one final program. जब सारा data वहाँ इकट्ठा हो जाएगा और you will get the final result. So every file you have to treat separately. जो भी input data होगा आपका, you have to treat that file separately and write separate programs. Velocity means real-time data. So in the last class, I discussed like we can have 2 types of analysis done. One is batch analysis, where you are collecting data from some source in one big chunk. Suppose you have terabytes of data here in the past. And anybody would like to ask any questions, let me know. So if you have any large amount of data recorded or stored in the previous, or in your data stores, databases, repositories, you can run a batch program on that data, maybe every week, every month, or a daily basis, you can say, and you can generate the insight from the data. So normally these things are done by a lot of banking companies, retail companies in India or overseas also. So bank generate a lot of data here. So they want to do analysis on their transaction customers,
even retail industry, they would like to know which products are selling more, what price they are getting. Can they increase the price? Price बढ़ा सकते हैं कि किसी का? उसके पीछे भी scientific reason होना चाहिए. You cannot just increase the price. If you have more demand and people are ready to buy at a higher price, like if you increase by 5%, you have to understand will people be able to sustain that 5% increase? So that is done through scientific way. So retail segment is very, very important in today's world. Retail segment में data बहुत generate होता है every day. Everything you buy becomes a single transaction in your basket. So whenever you buy any single item and you store it in your basket, that becomes a single record in the table. Telecom is another. So which segment or which area or who are the subscribers which are giving you maximum business, or which area is giving maximum business? Kis area mein telecom? Because ultimately, how the telecom industry works? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. It is pure air. मतलब हवा का पैसा है एक्चुअली, कुछ है नहीं उसमें. टावर इंस्टॉल कर दिए हैं, अगर टावर को कोई ज्यादा यूज करेगा, कंपनी विल मेक मोर मनी. टावर को कोई यूज ही नहीं करेगा तो वे विल दे गेट द रेवेन्यू. सो टेलीकॉम इंडस्ट्री में रनिंग कॉस्ट कुछ नहीं होता है. यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे टावर खड़े कर दिया एक एरिया में, 2 एरिया में, अब वहां पे कोई बात ही नहीं कर रहा है तो वो टावर वेस्ट जा रहा है. वॉट एवर इन्वेस्टमेंट यू हैव डन. सो बिलिंग आपकी नहीं हो रही है उस एरिया में, क्योंकि नोबडी इज कम्युनिकेटिंग, नोबडी इज टॉकिंग, तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आर लेस. So it all depends upon how many subscribers are using that services in that area, because your fixed cost is there. आपने टावर इंस्टॉल कर दिए, मोबाइल जो भी आपके सेल टावर्स हैं, whatever cost you're running, whether you are using that tower or not, you have to pay monthly rent, you have to use those tower. So here you have to understand कि भाई particular area में अगर कोई टावर काम नहीं कर रहा है, you have to shift that tower. You can't keep on using that tower and waste your money. Rather, you should be deploying your tower in those areas where you need more, where there's a demand for more communication, like business areas or city centers, जहाँ पर where people get they come together on weekends, on holidays. So you have to identify those locations where the demand would be more for your communication. So every business has a core segment, और उसको ढूंढने के लिए we can do a batch analysis. Whether it is banking, retail में कौन सा प्रोडक्ट किस महीने ज्यादा बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए, we can take out from past data, we can manage the inventory accordingly. क्योंकि अगर we want to sell it in the next month, then we have to manage the inventory also. Demand अगर आएगा तो you can't generate the products automatically overnight. So you need to manage the inventory. So inventory कैसे manage करोगे? Last year का data you need to analyze and see, understand how much did you sell last year in the same month and what was the demand. So accordingly we'll be managing an inventory. So in short, you are running a lot of batch analysis on your past data, and based on that you're making your future actions, you're deciding your future actions. That is called insight. So when you draw insight, actionable insight, on that actionable insight purpose, you are basically running your organization. So whatever actions you take, you'll be taking on actionable insight based on that, and that will give you advantage. Otherwise, if you don't do all this, then what happens? You will be losing out revenue, you will be losing money, you may have losses. That is what that's why the difference in good companies and bad companies are different. What is the main difference? Those companies which are doing proper analysis regularly, so they know where they are standing. अगर आप एनालिसिस ही नहीं करोगे अपने बिजनेस का, how will you know where are you standing? So you will not be able to take any action. So analysis is very important.
Now the problem is that data has become very big. Banks kaho, retail kaho, telecom kaho, they are all dealing with big data. So it's not easy. It is not like in KB or GB, KB, GB data hai, so we can manage, MB hai, so we can manage. No. Now the data is now floating in the territory of terabytes and petabytes. So challenges will be there. उसके बाद ही आप कुछ process करके उसका you can find out some actionable insight. So this is batch. We'll be focusing today on batch more. Streaming I will discuss later on. I don't want to combine two things today. But streaming is nothing but real-time applications where you are processing data in real time, like stock market or different, you can say, taxi services, cab services, Ola, Uber, or maybe other type of services which are there in real time. So I don't want to discuss that today. We'll keep it for next time when we cover real-time application systems. Till now, everyone is clear on batch. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Batch में क्या एक साथ data लेके we can process the data at one go. एक bunch में we can process. So let's understand for a banking example how we can achieve big data analytics in batch. So we'll take a banking example. So let's take a, now banks are what? Banks are financial institution, right? Yes, sir. They lend money to the borrowers and they take money from depositors. So जो भी difference है interest का, that is how they make money. And plus nowadays banks are in different business, selling insurance and all that. So banks का एक ही base होता है, that is customer base, whether it is a depositor or whether it is borrower. Suppose if I give you a scenario जहां बैंक का customer day by day कम हो रहा है. So what will happen to that bank? Customer base day by day कम हो रहा है. Profit कम होगा. People are leaving that bank. So because of not getting good quality service या जो भी कहो आप, किसी को banking पसंद नहीं आ रहा है, they are not giving good quality service. So maybe other banks are giving them good, better service. So customer base कम होगा, so you will be losing the revenue first. पहले तो revenue आपका कम हो जाएगा तुरंत. जो भी आपका income है, revenue है, that will drop. But आपका fix खर्चे तो fix है आपके, जो भी salary cost है, बिजली का cost है, power cost है, rental cost है, that is all fixed. So what will happen? Slowly and slowly, gradually, the bank will go into a loss. Because expenses are fixed, revenue is falling. A time will come, the bank will now into a red. Red matlab, it will be in a loss-making proposition. So इसका मतलब क्या हुआ? Customer is a key, right? Customer base should not come down. As a banker, I should always worry, or as a retailer, not only banks, any service industry, telecom आप देख लो, retail industry देख लो. Customers ही नहीं होंगे तो how will you generate revenue? You can't generate revenue without customer base. Wherever we are providing service industry, we need a good customer base. Now customers can leave due to many reasons. This process or this concept is called customer churn. जब कभी भी customer आपको छोड़ के जाता है, that is called customer churn. Churn means loss of customer due to competition. Now this competition was not there 30, 40, 50 years ago, right? पहले तो कोई competition ही नहीं था. PSU banks होते थे, MTNL होता था, BSNL होता था, you take or leave it. तो आपको you were forced to take the services, whether you like it or not. But आपको वो service लेना पड़ता था. Anyhow, there's no other option. But now we are living in a more competitive world. We have so many options. So we can, if I don't like any banking service or a telecom company, good quality service, I will not wait. I will switch over to another bank or another service provider. So this concept is called customer churn.
So every banker or every service provider will be always keeping an eye on customer churn. कितने customer घटने वाले हैं और घट रहे हैं. Now, can you tell me any concept is there? कि एक बार customer चला गया फिर कुछ नहीं कर सकते. But what we can do before the customer leaves, if I know the list of those people who are unhappy, तो मैं कुछ कर सकता हूँ. I can stop them from leaving. I can convince them. I can solve their grievances and bring them back on board. So is there any way we can find out this list in advance? Can we predict this list from our total customer base? Suppose मेरे पास 10 लाख customer है, 1 million customer है. Everybody will not be unhappy, right? So उसमें से list निकाल के देना. How many customers are unhappy? Can we do it? फीडबैक लेके फीडबैक क्या है? 10 लाख लोगों का फीडबैक लेते रहोगे, तो फीडबैक लेने में 10 साल 2 साल लग जाएंगे, तब तो कस्टमर चला ही जाएगा आपका. We can check their transaction. सर वो लिंक भी तो भेज सकते हैं कि we will send the link. कोई जरूरी नहीं है. एवरीबॉडी विल नॉट. कोई जिसको इंटरेस्ट होगा वही लिंक पे आपको या करेगा. उनकी कंप्लेंट्स रजिस्टर होगी या जो पर्टिकुलर अकाउंट में उसका डिपॉजिट्स कम होते गए या फिर ट्रांजैक्शंस कम होते गए. So that इसका मतलब है कि there is a concept called predictive analysis. एक concept है जिसको मशीन लर्निंग बोलते हैं. आपने सुना है मशीन लर्निंग का नाम? What is predictive? Yes. Predictive analysis क्या होता है? जहां पे आप हिस्टोरिकल डेटा को लेके उसके साथ यू प्रोवाइड सम स्टैटिस्टिकल डेटा मॉडलिंग, उस पे मॉडल जनरेट करते हैं, या रिग्रेशन मॉडल्स या क्लासिफिकेशन मॉडल्स, and you are using data mining and machine learning techniques. So this technique we can use to generate the outcome. और अपनी डेटा से वो करना है, वो किसी और का डेटा नहीं लेना है. अपना जितना भी पहले का डेटा है 20 साल का, यहाँ पर 20 साल का डेटा काम आएगा अपने को. हिस्टोरिकल डेटा है ना, 20 साल का डेटा, जब से बैंक चालू हुआ है, जब से बैंक का डेटा डिजिटलाइजेशन पे हुआ है, कंप्यूटर पे स्टोर हुआ है, तब से डेटा वी हैव टू टेक द एंटायर डेटा. और ये डेटा बहुत बिग होगा, बहुत बड़ा होगा, मे बी इनटू टेराबाइट्स. But now we don't need to worry. We can process terabytes of data. But by using this concept, predictive analysis, we can easily find out. मतलब 100% तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, but you will get a good way to know how many customers are about to churn in future. And you would also know the reason, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं. अगर आप वो reasons एक बार फिक्स कर दोगे तो फ्यूचर में आपके कस्टमर नहीं छोड़ के जाएंगे, because you'll be fixing that issue forever. कोई भी अगर प्रॉब्लम है, अगर आपने वो प्रॉब्लम फिक्स कर दिया तो नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट अकर, राइट? कोई प्रॉब्लम है जब भी तो पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर सर्विसेज. सर या बोलिए सर, अकाउंट एक्टिविटी से हमें ये कैसे पता चलेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो वही मैं आ रहा हूँ ना धीरे धीरे, ये मशीन लर्निंग बताएगा आपको. ओके सर. हाँ, दैट इज द जॉब ऑफ मशीन लर्निंग. इसमें पैटर्न निकलता है और पैटर्न से वी कैन फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली. सो नाउ एज ही आस्क्ड, जैसे इन्होंने पूछा कि भी कैसे पता चलेगा. सो वी हैव टू प्रिपेयर वन डेटा चार्ट फॉर मशीन लर्निंग, एंड दैट डेटा चार्ट इज कॉल्ड फीचर एंड लेबल्स. एक लेबल का कॉलम होगा जिसमें वी विल बी राइटिंग whether that customer has churned or not. So हर कस्टमर का right from beginning, right from beginning. But let us first understand what data we are targeting. Our raw data क्या है? So that we are not look into it. So what is our raw data we are targeting? Now raw data would be our transaction data right from beginning, जब से बैंक का डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है. So जो भी डेबिट क्रेडिट एंट्रीज हैं, they will be recorded in some files. और ये बहुत बड़ा डेटा होगा लास्ट 20 years का. So this will be structured data, you can say. Lot of email data would be there. People are corresponding through emails. They are sending their emails, right? Then we have CRM data. CRM data means customer relationship management data. So whenever you call customer care को call किया या customer support को आपने email लिखा,
So that data gets recorded in CRM information. So anybody is not happy, वो बार बार email लिखेगा, बार बार call करेगा कि I'm getting some problem, please try to fix it up. So number of calls will get recorded in CRM for that customer ID. Nowadays, people are also deploying social media data in every bank. So हर bank के पास अपना social media account है. So all banks are now into social media platform. They have Twitter handle, Facebook, WhatsApp, whatever. So all the remaining data would be classified as unstructured data. Can we call this raw data for bank as big data? Yes. Because it has volume and it has variety. In fact, there are two important features of big data. It not only had volume, suppose the raw data is 200 TB. So it has volume and it has variety. Now this is my raw data right from beginning. And from this data, I need to find that pattern. If you look at technically, this data is of zero value. इसकी कोई value नहीं है आज की तारीख में, but we can convert this raw data into some valuable object. So what we are looking at here in the machine learning, this is called data preparation or data wrangling in machine learning. We create set of features and हर ID का एक label होगा, churn label. Suppose we have ID for every customer. ID 1, 2, 3. So churn hoga, have that customer left or not, Y, N or Y, whatever. So till now, that customer is with us or has that customer left. Now, as the person asked me in the middle that what type of features we should draw. Certainly, we should not draw any unwanted feature. We should draw those features or those data points which can affect your churning. So my first feature could be types of accounts or number of types of accounts. So you know that in banks, there are different types of accounts: saving, home loan, car loan. कोई भी एक्टिविटी करते हैं नया अकाउंट खुलता है, am I right? Everyone, you know that in banking. If you are taking a deposit, fixed deposit, उसका नया account होता है. If you are taking some loan, education loan, you are opening a new account. So if you have n number of accounts, certainly it's not easy for you to churn. पहले तो आप उन सबको account को close करना पड़ेगा तरीके से. Then only you can churn. So that is one thing. We can get to know the list of accounts. Plus, secondly, balance क्या है उन accounts में. अगर balance ज्यादा है, तो will that customer churn? Tell me. Very unlikely ना. फिर भी अगर वो churn करता है तो मतलब उससे ऊपर कोई बहुत बड़ी चीज हुई है. और उसके बाद भी वो छोड़ के जाता है, मतलब something has happened even worse than that. नहीं तो इतना बड़ा balance क्यों maintain करता बैंक में? So balances, how many balances, what balances they are holding in these accounts? How many times the customer care call were made? Agar in last 6 months, 3 months, you can make a timeline and then you can divide that. Okay, how many in 6 months, these many times the customer care was called by that person. So something is going wrong. So all those data points which are responsible for making the customer churn or making the customer to go away from the bank or remain with the bank, continue with the bank, those data points we need to create in a. So basically, अपन यहाँ कर क्या रहे हैं? We are transforming this data, raw data, into this form of data. Now, once you prepare this data for machine learning, normally what happens in machine learning, you split the data. We split the data into two parts. We call it training data, testing data. Normally we would split in 70-30%. And training data के ऊपर we define the model. So we train the model. उसको बोलते हैं training the model.
using your statistical algorithm like सर एक वापस ट्रेनिंग टेस्ट का होता है, मतलब बस ब्लैंक हो गया। ये जो डेटा बनाया है हमने, सपोज ये डेटा बनाया 20 GB का। यस सर। तो ये इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 70% ट्रेनिंग डेटा, 30% टेस्टिंग डेटा। So 14 GB will become your training data. It's a random split. तो सिस्टम रैंडम स्प्लिट करता है। 14 GB जाएगा ट्रेनिंग डेटा सेट में, मतलब दो फाइल बन जाएंगी, एक फाइल की जगह दो फाइल बन जाएंगी ऑन 70-30% बेसिस। क्लियर? यस सर, यस सर। Now what is the role of training data? We are training the model using the training data. यहाँ पर you have to use your machine learning techniques like whatever algorithms like classification, regression. जो भी आप मशीन लर्निंग में स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करोगे, यहां पर आपकी उसको अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार मॉडल बन गया, यू नीड टू टेस्ट द मॉडल विद टेस्टिंग डेटा। जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको दो रिपोर्ट मिलेंगी, एक तो टेस्ट रिजल्ट टेस्ट से मिल रहा है, प्लस मॉडल जो रिजल्ट बना के दे रहा है। सो यू कैन कंपेयर, बिकॉज टेस्टिंग डेटा में तो एक्चुअल डेटा मॉडल है, डेटा है चर्न का, बट वो जो मॉडल आप टेस्टिंग डेटा पे रन करेंगे दैट विल गिव यू सम अदर रिजल्ट। तो उसका परसेंटेज क्या है, एक्यूरेसी लेवल क्या है। आई एम नॉट सेइंग द एक्यूरेसी लेवल शुड बी 100%। कोई भी मॉडल अगर 100% एक्यूरेसी देता है दैट इज नॉट अ गुड मॉडल, दैट इज अ लॉ इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में एवरेज गुड मॉडल्स आर अराउंड 70-80%। ये 100% हुआ तो मतलब वो वन साइडेड डेटा है, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग यू 100% एक्यूरेसी। So, matlab, once you are not satisfied, you can go back, you can add some more features, you can use some other technique to define your model. So you can keep on trying till you don't get the best model out of your entire exercise. Once you get the best model, then you can deploy. So you can deploy now the best model on your current data. और वो क्या बताएगा आपको, हाउ मेनी कस्टमर्स आर अबाउट टू चर्न इन फ्यूचर। दिस इज व्हाट आई कॉल इनसाइट, एक्शनेबल इनसाइट। और जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, आप व्हाट विल यू डू, यू विल ट्राई टू टॉक टू दोस कस्टमर्स। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इंफॉर्मेशन विल बी 100% एक्यूरेट, बट अगर 60-70% भी एक्यूरेट हुआ, नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो यू नो दैट हाउ मेनी कस्टमर्स आर अनहैप्पी, यू कैन टॉक टू देम, यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, you can fix that issues, so future में आपको problem नहीं आएगी। So this is what we are doing here. We are using machine learning to draw an actionable insight, and that actionable insight we are implementing, and we are trying to save lot of money, because if customer leave, then you can't do anything. Before, if you are losing customer, if you can help and you can solve the matter, nothing like it, nothing like it. So that is what we intend to do. But the problem here, the biggest challenge is that how to convert 200 TB data into 20 GB. It is not like a magic wand. को जादू की मतलब, it's not a magic wand, right? That you just try to run a magic wand or data will get transformed. So can we process 200 TB data on one machine? Tell me. No. Technically, yes, you can do it, but it will take a lot of time. It will take months and months and months. Because आप क्या करेंगे, what will you do? You will take each file separately, run the program, get the output, बाद में दूसरी file लेंगे. So it will take a lot of time, months and months. By the time you get the output in machine learning, in the meantime, many of the customers would have left already. So in any analysis, remember, time plays a very important role. Time is an important factor. Just because somebody asks you to analyze the data, इसका मतलब ये नहीं कि you should take your own sweet time. आराम से analyze करो और बाद में कल निकालो, no. If you take a lot of time, that value will be lost.
हेलो हेलो सर हाँ, बीच में थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट हो गया था, 1 सेकंड Yes. 2 सेकंड. So now I'm audible to everyone, right? यस सर Yes, sir. Okay. So I was talking about time when I got The disconnected. screen is not Sir, set. स्क्रीन नहीं दिख रही. Okay, let me share my screen again. So here I was talking about time factor. Time plays a very important role. How to process data in the shortest time. We cannot just take our own sweet time to process the data and get the output, because जब तक ये data prepare नहीं होगा आपका 20 GB वाला, you cannot move ahead. आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं. But this has to be done in a very quick time. You cannot just spend months. If you spend a lot of time, in the meantime, you lose the list of customers only. And what's the point in doing all this hard work? So here we are going to work on a Hadoop cluster. Hadoop cluster is the best, you can say, platform for transforming this data into your output as quick as possible. So let's try to see that. Yes, you saying something? कुछ कह रहे हैं आप लोग? Hello, Shubham. So here you can see here that we have a cluster of many nodes in one setup. Cluster का meaning क्या होता है? Cluster means lot of machines put together in a single network system, right? So we are placing lot of machines together in a single network system. Now each of these machines are separate physical machines. These are not virtual machines. These are proper Unix systems. So you can tell that they are Unix boxes. And हर machine के ऊपर will be having its own IP address, part of the network. And every machine will have a capacity like 10 GB, 10 TB storage, and some 64 GB RAM, and some processor, maybe 8-core processor or 16-core processor. You know what is 8-core or 16-core processor, right? Machine के ऊपर जो रहता है, number of processors. yes. You are all aware, right? So every machine will have a proper RAM and a resources. So now you can deploy n number of machines. So right now we can see there are 5 machines. Yeah, somebody was asking me. सर आप कोर के बारे में बता रहे थे ना 8 और 16, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा. हाँ, so 8-core processor मतलब क्या होता है? You can run, they are like quad core or 8-core, means there are 8 processor in one machine. अभी आपका अपने लैपटॉप पे कितना प्रोसेसर होगा? डुअल कोर है तो दो कोर होंगे, मतलब यू कैन रन पैरेलली 2 जॉब्स. अभी आजकल की मशीन में सिंगल प्रोसेसर नहीं होता है, इट्स लाइक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. सो 8 कोर, व्हाट डू यू मीन बाय 8 कोर प्रोसेसर? साइमल्टेनियसली 8 जॉब कर सकते हैं. हाँ, 8 जॉब पैरेलली कर सकते हैं, इनफैक्ट 16 कर सकते हैं. वो कुछ उसमें मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम होता है, सो यू कैन डू 16 जॉब्स एट वन टाइम. So that is the importance. If you have high core machines, more jobs can be implemented. और अगर ज्यादा RAM भी हुआ तो better है, क्योंकि then you need more RAM for every process. अगर 16 process run कर रहे हैं तो हर machine के साथ, हर process के साथ 4 या 5 GB चाहिए आपको. So you can process that much data faster. So that is the idea here, that you create such Unix boxes with some storage capacity like 10 TB, 20 TB, some resources like RAM and number of cores. So abhi you can see there are 5 machines. So total data is network, here is cluster bay, how much data we can store. Every machine has 10 TB capacity. 50 TB. 50 TB, right? 5 into 10 TB each. Everybody is able to understand this?
Yes, sir. Yes, sir. Total Yes, size sir. of the cluster is 50 terabytes. That means it is like behaving like a single logical unit for you. एक मशीन पे आप 50 टेराबाइट सर ये स्टोर, हडूप का या बोलिए। हडूप क्लस्टर में जो मशीन्स होती है वो डेटाबेसेस होते, मतलब वो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं या लाइक लैपटॉप्स वगैरह होते हैं? नॉर्मली अगर इफ यू गो फॉर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, लैपटॉप का आप क्लस्टर बना सकते हैं, दैट इज नॉट अ इम्पॉसिबल, बट अल्टीमेटली जो कंपनीज में क्लस्टर बनते हैं वो सर्वर्स के बनते हैं, बिकॉज 64 GB रैम या 128 GB रैम आपको लैपटॉप पे मिलेगा क्या? नहीं। हाँ, सो यू नीड अ गुड क्वालिटी सर्वर ना, नहीं तो फिर आपका वो प्रोसेस कितना करोगे आप लैपटॉप पे? खाली एक नेटवर्क सिस्टम खड़ा करके क्या मतलब है? दैट नेटवर्क सिस्टम शुड आल्सो रन, वो काम भी करना चाहिए। You can create a network system of Hadoop on by using a laptop, but वो लैपटॉप में हार्डली एनी स्पेस है, 4 GB 8 GB का मशीन होगा, मैक्सिमम 16 GB की मशीन होंगी। सो हाउ मच प्रोसेस यू कैन डू, प्लस आपके लैपटॉप विंडोज बेस्ड होंगे, वी नीड यूनिक्स Yes, sir. सिस्टम्स, वी नीड यूनिक्स सिस्टम्स, सो प्रॉपर यूनिक्स बॉक्सेस चाहिए, प्रॉपर यूनिक्स बॉक्सेस, बिकॉज just now you asked me, right, what about data storage? We use flat file system like Unix. So we'll discuss what is flat file, but what is this entire cluster behaving like? It behaving like a single logical unit for you. So इसको आप सुपर कंप्यूटर बोलो, सिंगल लॉजिकल यूनिट बोलो, एनीथिंग यू कैन से। सो जितने भी यूजर्स हैं, दे विल बी कनेक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड। सपोज दिस क्लस्टर इज स्टोर्ड एट सम डेटा सेंटर, and the client machine will be working from their respective location, maybe from their offices, wherever they are sitting. So they will be connecting to this Hadoop and they'll be giving the instruction to load data or to download data, you can say, or to run any programs on the data which are already stored in the cluster. So whatever instructions are given, they are given from the client side. Anything you want to upload data, download data from Hadoop, or you want to run any programs which is there, the data is there on the Hadoop side. जैसे आप लोग करते हो normally file system में, right? So your client and you have a big logical machine, logical unit. Now we can have a bigger cluster also. Suppose tomorrow if you want to store 500 TB data, what will you do? Tell me. Data source, sir. So we can add more nodes. One way is that we can increase the, we can scale up. Scale up means we can add more capacity to the existing node. So 10 ka 20 kar diya maximum, but it cannot become 100 TB, right? So the best way is to scale out. Scale out means horizontal scalability. Horizontal scaling. Yeah. Scalability, you can say. Horizontal scalability means, you know, that everyone understood. We are adding more physical machines to the cluster. एक होता है scale up और दूसरा होता है scale out. Scale up means you are increasing the capacity of existing machines. अभी हर machine का capacity 10 TB है. So maybe you can increase it up to 15 TB or 20 TB. That's one way of doing it. But the major changes will happen because of scalability, horizontal scalability, where you can increase the number of nodes and make it bigger cluster. And this you can do without shutting down the cluster. That is another advantage. So in the running mode, you can add more nodes and you can increase your space. So from 550 TB, you can go to 500 TB or 5000 TB. Whatever size you want to create ultimately for your data storage, you can easily create that cluster. So this type of feature gives you one important takeaway. And that takeaway is that you can store
any amount of data. Can we say it? Can we store any amount of data? Yes. Because of horizontal scalability, we can increase the size of the storage capacity, or we can make it more bigger as we keep on adding more and more nodes in our cluster. These are also called nodes. हर machine को node भी बोलते हैं, NODE. So we call them nodes. So we can add more nodes whenever it is required. So this way we are covering the volume part. Remember, we can cater now volume, as much data we want to store. We are able to capture that much data. Now the next question comes, variety part. सर हाँ बोलिए. सर जो AWS में होता है ना कि वहाँ पे भी अपन नंबर ऑफ मशीन्स ऐड कर सकते हैं, उसको भी इसके लिए हाँ, फीचर वही है ना, लॉजिक वही है. सर दोनों में डिफरेंस क्या है Hadoop क्लस्टर में और अरे AWS Hadoop क्लस्टर यूज करता है, उन्होंने खुद का Hadoop क्लस्टर बनाया हुआ है. AWS के पास कोई मशीन मतलब कोई दूसरा नया टेक्नोलॉजी नहीं है. तो दोनों एक ही है मतलब? हाँ एक ही टेक्नोलॉजी है ना, Hadoop एक है, वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो. उसने अपना नाम दे दिया AWS क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम. Azure भी वही यूज कर रहा है, गूगल भी वही यूज कर रहा है. ओके. तो एवरीबॉडी इज यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी. कमांड भी वही है आपके AWS पे. जब आप कमांड रन करेंगे तो सेम कमांड है Hadoop वाले कमांड्स. Because Hadoop is open source, that is why they can deploy Hadoop on their system. उसको मॉडिफाई करके वो लोग अपने तरीके से they are offering the services. अभी आपको Hadoop इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले बताओ? नहीं पता सर. नहीं, सबसे पहले you have to buy the hardware ना, पूरी मशीन खरीदनी पड़ेंगे, डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा. हाँ, डेटा सेंटर खुद का बनाना पड़ेगा. हाँ खुद का बनाना पड़ेगा, मतलब मैन पावर रखना पड़ेगा जो पूरा मैनेज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद आप काम कर पाओगे. बट क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, आप तुरंत काम कर सकते हो ना. उनका देते हैं ना. तो सर जो अपन ऑपरेशन Hadoop क्लस्टर से अचीव कर रहे हो AWS से भी अचीव कर सकते हो? हाँ सेम ना, बिकॉज वो डिफरेंस ये है कि वो ऑन प्रीमाइस है, वो क्लाउड पे है. Hadoop ऑन प्रीमाइस है. ये तो Hadoop ऑन प्रीमाइस हुआ अगर आपने अपने घर में स्टैब्लिश किया तो. हाँ. आपने हार्डवेयर इंस्टॉल किया, अपने मशीन अपने घर में 10 मशीन का हार्डवेयर, सो दैट इज ऑन प्रीमाइस ना. ओके. फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसका. इसमें एडवांटेज ये है कि आपका डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. क्लाउड पे डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. कोई अगर AWS बोलता है ना आवर डेटा इज वेरी सीक्रेट, ऐसा कुछ नहीं होता है. एवरी डेटा इज कॉम्प्रोमाइज्ड. अच्छा. कोई भी हैक कर सकता है. तो अगर आपका डेटा, जैसे यू आर रनिंग अ स्मॉल कंपनी एंड इफ यू फील दैट मेरा डेटा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन यूज क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम. बट आप जितने भी इंडिया में बिग कंपनीज देखेंगे, बैंक्स हुआ या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे विल नॉट गो फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग. उन्होंने अपना खुद का इन हाउस क्लस्टर बनाया हुआ है. बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नेवर अलाउ देयर डेटा टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड क्लाउड पे डालने से. सो एनीबॉडी कैन हैक देयर डेटा क्लाउड पे. ओके सर. सो देयर आर टू वेज, आइदर यू डिप्लॉय योर ओन क्लस्टर घर में, उसको ऑन प्रेमाइज बोलते हैं, या फिर आप क्लाउड पे यूज करो. उसमें क्या, जितना यूज करोगे उतना ही पेमेंट करना पड़ता है. पे एज पर यूज होता है. तो उसमें हार्डवेयर इंस्टॉल करने का वो कोई टेंशन नहीं है. हार्डवेयर इंस्टॉल करना है या फिर मैन पावर डिप्लॉय करना है मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो सब उनका काम है. आपको खाली उतना पेमेंट करना है जितने आप मेमोरी यूज करोगे, जितने आवर्स आप यूज करोगे, जितना हार्ड डिस्क आपको चाहिए. So those parameters will decide how much you have to pay per hour. और उस हिसाब से you have to pay. So many times कई लोग क्या अपना क्लस्टर स्टॉप करना भूल जाते हैं AWS पे, तो उनका बिलिंग चलता रहता है पीछे बैकग्राउंड. Yes, sir. Sir, this is like a private cloud, or AWS. Hadoop clusters. Hadoop cluster is a private cloud. वो तो in-house cloud है ना, it's a private cloud because all our IP addresses they would be in different locations. क्योंकि आपके पास अगर 500 मशीन है, 5000 मशीन है,
you will not keep all those machine in one location ना, उसको आप अलग अलग जगह पे डिप्लॉय करोगे. अगर एक ही जगह पे आग लग गई तो क्या करोगे, पूरा डेटा बढ़ जाएगा आपका. So normally what happens, companies deploy in different locations. Minimum 2 या 3 locations रखते हैं क्योंकि पूरा का पूरा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए. अगर सारे मशीन्स एक जगह पर रहेंगी, एक ही बिल्डिंग में रहेगा, एक ही प्रीमाइस में रहेगा और वहां पे कुछ हो गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, आग लग गई या बिल्डिंग क्रैक हो गई, गिर गई, कुछ भी हो सकता है, तो आपका पूरा डेटा एक साथ चला जाएगा. So it's like a private cloud, you rightly put it, but you are using different locations, but all of them are running under one network system. So they are talking to each other without any password requirement. So they are all password free. क्योंकि इसमें SSH इंस्टॉल करते हैं, सिक्योर शेल एनवायरनमेंट, जब क्लस्टर डेवलप करते हैं. So all these machines can talk to each other without any password. नहीं तो हर इंटरनेट पे क्या होता है, you require a password every time you connect to any other machine. So इसमें क्या की जनरेट करते हैं, because of that key we are able to authorize की जनरेट करते हैं दूसरे मशीन की, हर मशीन पे स्टोर होती है वो. Have you worked on authorization key? How the one machine talks to another machine in a network system? नहीं सर. No, sir. Now let me just ask you, जैसे दो मशीन है A and B, और both these machines are in different location. A is here and B is here, and I want to talk to this B without password. So how will I do it? I will generate some key here, और इस की को मैं अपने इस A के फाइल में कहीं ऑथराइज की के फाइल में स्टोर करूंगा. So whenever I connect to B, I will try to check the key. Is that key available, matching with the B? Immediately, if it matches, I can talk to that machine without any password requirement. This is called secured shell environment. So we create SSH or secured shell environment. नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 500 मशीन का आपस में बात कैसे करेंगे लोग, और 5000 मशीन आपस में बात कैसे करेंगे क्लस्टर में? नॉट पॉसिबल इफ यू डोंट हैव दिस एक्टिविटी, सिक्योर शेल एक्टिविटी और एनवायरनमेंट. So it has to be complete this type of framework which we are using in the network system. Clear everyone till now? So we were discussing till we are using horizontal scalability, and we are storing, we can store any type of, any amount of data. That was our first point. Okay, now we are dealing with variety data. So we want to store all structured data, unstructured data on this cluster. So कैसे स्टोर कर सकते हैं? Can we have a database here? Database इंस्टॉल करने से काम चलेगा? Would database be good enough? So answer is no. Vishal is saying No, sir. So we need to have another layer or system which can store any type of data, and nothing like it flat file system of Unix. So we create a flat file system in Unix. In flat file system, आपने Unix किया है ना आप लोगों ने? Yes, sir. So tell me, in Unix is extension or dot is compulsory in a file name? No. So it depends on the command we put. अरे मैंने आप पूछा कंपल्सरी है क्या नहीं, ये तो यस होगा फिर नो होगा, उसमें डिपेंड क्या करेगा? Suppose if I give you this file name, file1 without any extension, is this a valid file name? No, sir. No, sir. You have to put an extension. Unix में? Linux में, yes. No, ये valid No, है. sir. This is valid.
फिर आप लोगों ने काम नहीं किया यूनिक्स पे? Sir, Unix, we work on Linux, sir. अरे लिनक्स करो यूनिक्स करो सब एक ही है, सेम है सेम है। वो भाई भाई हैं सब। file1 और file1.txt are two separate files. आप डॉट लगाते हो ना, बट दैट डॉट हैज नो वैल्यू. इट इज नॉट लाइक विंडो सिस्टम. डॉट इज जस्ट लाइक योर 1 और t. It's a part of your file name. Dot is just like a character, any character. So there is no extension. Suppose I create a file like this, file1 dot, I give today's date 18/05/22. ये भी चलेगा. What's wrong in this file name? कुछ भी नहीं है. मैंने file1 दिया, डॉट दिया और बाद में आज की डेट दे दी है. So with the .txt represents that what type of file it is, no? No, that is your mistake. You can keep an image file also in .txt. You can have images also stored. You can have binary data also. That happens in Windows, that we are storing text data in Windows. सर लिनक्स में .txt लिखते तो टेक्स्ट फाइल बन जाती थी. टेक्स्ट फाइल नहीं बनती है, आप नॉर्मल ओपन फ्लैट फाइल बनती है, उसके अंदर आप कुछ भी डाल दो. आप इमेज को भी ट्रांसफर करके, ये जो आपकी इमेज दिख रही है ना JPEG फाइल, इसको मैं file.txt में स्टोर कर सकता हूँ. ऐसे कैट करके Hadoop cluster.jpg और एरो करके मैं कोई भी फाइल में स्टोर कर सकता हूँ. तो ये जो आपको सामने पेज दिख रहा है Hadoop cluster.jpg, ये file1.txt में पूरा डेटा चला जाएगा. सो file1.txt will be an image file in this case. सर तो फिर मैक्सिमम मतलब केस में .txt क्यों करते हैं यूज वो स्पेसिफिकली? वो तो आप कहीं से फाइल उठा के ला रहे हो, तो आप फाइल नेम थोड़ा चेंज करोगे यार. यू आर गेटिंग द फाइल फ्रॉम सम विंडोज प्लेटफॉर्म, या फिर कोई CSV फाइल आप कहीं से लेके आ रहे हो, तो उसको why you want to change the file name? No, sir, while we were doing Linux, we had a practice of writing .csv or .txt while making a file. So हाँ ठीक है, वो ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस में किया है कि you have converted, but when you go to your lab tomorrow, just try to create one file with file1. बन जाएगी आपकी. You can make a file without extension also. उसको cat करके देखना आप आराम से. You can display the contents. You know the meaning of cat command, right? Yes sir. Yes sir. हाँ, तो आराम से cat command रन करेगा file1 पे. जो भी आप file1 में टाइप करोगे, you run the cat command, वो आपको दिखेगा contents में आउटपुट. So Unix में extension is not important. वो तो आपका एक फाइल नेम का पार्ट है. Try this also, making this file1 dot and give the date. वो भी फाइल बन जाएगी. अब आप बोलोगे 18/05/22 क्या एक्सटेंशन है? कोई एक्सटेंशन ही नहीं है. बट we are not worried about extension in Unix. We are just giving any name to our file. And what about file names are case sensitive? No, sir. They are case sensitive. आपका file1 और कैपिटल F file1 is different file. विंडोज में नहीं है, बट यूनिक्स में दे आर केस सेंसिटिव. ये भी ट्राई करना, 2 फाइल बनाना, एक बिग कैपिटल F से, एक स्मॉल f से. सो दे आर केस सेंसिटिव. इन यूनिक्स हर चीज केस सेंसिटिव है. फोल्डर नेम इज केस सेंसिटिव, फाइल नेम्स आर केस सेंसिटिव. Extension is not compulsory, it's just a part of your file name. That is why it is called a flat file. ना नहीं तो अगर फाइल से पता चलता उस फाइल के अंदर क्या स्टोर है, then it's not a flat file anymore. फिर तो विंडोज का फाइल सिस्टम हो गया वो. फ्लैट फाइल का मतलब ये होता है कि you can store any data in a file. So that is the meaning of flat file in Unix. So this way you can now make one more observation, that you can store any type of data. Am I right, everyone, in your Hadoop system? Yes.
whether it is structured data, unstructured data, semi-structured data, you can store any type of data. Now the main challenge was of time. That is where we started. Sari problem time ka hai. How much time are we using to transform the data? So that is the main challenge. Storing data in Hadoop is not the idea. That is not our objective. We are doing all this to transform data. So the third important observation or takeaway of this cluster should be high speed processing. अगर ये high speed processing नहीं कर पाते अपन, so we are not going to use Hadoop at all. We are using only Hadoop because of this reason. Otherwise, the entire Hadoop is of no value, zero value. This is the only reason we are using Hadoop. We want to transform data very, very fast. Now, how are we doing this? Let us understand. Though I have discussed some of the important points in my last class, demo class. Anyone you remember? What is the concept we are using here for high speed processing? I would be using distributed storage. First thing I'll be doing, I'll be using a distributed storing of data. Now, what do you mean by distributing storing of data? For example, I have a table outside in some database, and that table has 1,000 rows of data. Right? That table has 1,000 rows of data. Now, when I upload this data on my Hadoop cluster using some tools, what will happen? Every node will have 200 records. So what I'm doing here, I'm splitting and distributing my data. And why I'm doing all this? So that when I need to process this data, I can use each machine resources to process data parallelly. So the second objective would be parallel computing. And this is going to help me in processing my data very, very fast at a lightning speed. If I try to do everything on one machine, I'll be taking a lot of time. But if I distribute my data on multiple nodes, I shall be able to process the data very, very quickly. Are you getting the logic, everyone? How that is possible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई example दे सकते हो on this term, on this same distribute storage? Any real-time example you can share? जहाँ पर ऐसा करने से we can achieve, we can reduce the time for that work. कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है या फिर ऑफिस में कोई भी काम होता है, do we assign entire work to one or two people, or do we divide that work across many persons? Divide the work on Divide So ज्यादा लोगों को we divide the work, right? And what is the objective? They will work parallelly and they will be able to finish the work faster. Yes, sir. Yes, sir. सेम लॉजिक अप्लाइज हियर. अगर मैं सारा लोड एक मशीन पे डालूंगा, दैट मशीन विल टेक मोर टाइम, बिकॉज एक मशीन पे डाला तो यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड्स आएंगे. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द टाइम टेकन टू प्रोसेस 1000 रिकॉर्ड विल बी मोर देन 200 रिकॉर्ड्स. बट सिंस आई एम रनिंग पैरेलल जॉब्स, I will be able to process this data parallelly. तो 200 records के टाइम में I will be able to process entire 1000 records. जितना टाइम एक मशीन पे लगेगा उतने ही समय में I will be able to process data on the other nodes also.
because all of them will work parallelly. Plus minus आप कुछ कह सकते हो 5-10%. कोई machine ज़्यादा fast है, कोई machine ज़्यादा slow है. But on a whole, these machines will run parallelly. And this is where we are achieving fast computing, high speed processing. Let me give you a mathematical example, because mathematics example will give you more insight how we can achieve high speed processing. So we'll take one example that we have 100 TB data with us. And this data we need to process on a single machine, single node. And उस machine की capacity है 100 Mbps. It can process 100 MB data per second. So can you tell me ये machine को कितना समय लगेगा to process 100 TB data? How much time will it take? First tell me the formula. Time is equal to what? Data divided by speed. Data divided by speed. So data is 100 TB. Can we divide by 100 MB? Okay, we have to convert No, sir. 100 TB to We have to convert 100 TB into 100 MB into MB. MBs. So 1 TB is equal So 1 TB will be equal to how much MB? 1024 GB. 1 GB is equal to 1024 MB. So basically square of 1024. This much MB will become 1 TB. So now we can put 100 into this number in the numerator column, and we can put 100 MB in the denominator column. So time is equal to 1024 into 1024 into 100. So this is my total 100 TB data. Divide by 100. 100 is your MB. So this number will get squared off. So we will get almost like 10,000, or sorry, if you take the number, it will be 1 million, not 10,000. Into 1024. So 1,048,576 seconds. This will be equal to, if you divide this by further hours, 3,600 seconds. This is 1 hour, right? एक घंटे में 3,600 seconds. So we have 291 hours. So one application of 100 TB data, एक single job. We are not running full jobs. एक job को run करने के लिए 100 TB का एक machine पे I am spending almost like 13-14 days. अगर series of jobs लिखना है वो भी ज़्यादा बड़े on a bigger data, then it becomes very, very time consuming. It may go in months. So this is not acceptable. This is what I told you in the beginning. That if you try to process data on one machine, you can do it technically, yes, but that will take a lot of time. And that time, whatever you're spending on that processing will be of no use, because by the time you get the result, the story will be over. So what we can do now, we can deploy the entire data on a Hadoop cluster. And I have a 100 node cluster here. So tell me, if I deploy 100 node cluster, 100 TB data, each node will have how much data? Approximately 1 TB plus minus whatever. So it would be like this. I would be having 1 TB data on every machine. So this is called distributed storage. If we are not doing distributed storage, we cannot do parallel computing. Remember that. That is a must. That is a must to have distributed data.
If we are not doing that, we cannot process data parallelly. So this is one machine, this is machine number 2, this is 100 machine. So now each node has 1 TB data. What we can do, we can process this data parallelly. So we can run some program. Now, can we say that the time taken to process 100 TB will be equal to 1 TB in this case? 1 TB के समय में we can process 100 TB data. जितना समय 1 TB को लगेगा 1 machine पे, उतने समय में we will be able to process entire data. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Logic right है? Yes, sir. And that logic is right because of parallel computing. Because parallelly अपन process कर रहे हैं. You can argue that कोई machine fast है, slow है, so you can give plus minus 5%. But it will not be a very big difference. So on a whole, you can say that in 1 TB time, you are able to process your entire data. So let's find out how much time we need to process 1 TB. Simple. So time for 1 TB will be equal to 1024 into 1024, right? Divide by 100. Why 100? Because I'm maintaining the same speed of single machine. So here in cluster also I'm using the same capacity of every machine. So this will compute into how many seconds? 10,486 seconds. Which will be equal to 2.91 hours. So within 3 hours, you are able to process the entire 100 TB data on a cluster. You can see the difference here. और ये टाइम को मैं और भी कम कर सकता हूं. If I increase the number of nodes, make it 500, you can get your result in minutes. Am I right? अगर 500 नोड का क्लस्टर हुआ तो Yes, sir. Yes. तो हर नोड पे डेटा कितना आएगा? 200 GB. When if I'm using 500 node cluster, so my data will be maximum 200 GB per cluster. 1 TB divided by 5. So 200 GB per machine को time कितना लगेगा? It will be maximum around 30-40 minutes. So entire data will get processed in like within 1 hour. Within 1 hour maximum, you can say, you can process entire 100 TB data on a bigger cluster. That is what we call high speed processing. And that is what we want. We don't want any system where we are generating output in days and months. That is not going to be workable. So we want a scenario where we are able to deploy on a system data such a way that we are able to get the result as quick as possible. So this concept is called what? Distributed storage and parallel computing. That clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So remember, the key part is, or the main part is to store your data in a distributed way. And then process it parallelly in order to achieve the result, faster results. So coming back to the main example. So what we'll be doing here, we'll be deploying our own cluster. Hadoop cluster here.
And what will happen in this cluster? We'll have some multiple nodes. And they are all part of network. This system is called in Hadoop HDFS, Hadoop Distributed File System. This is called HDFS, remember. HDFS is called Hadoop. I'll just write it down. Hadoop Distributed File System. Distributed. Why we are saying this? Because every data we receive in Hadoop, suppose if I'm bringing one file from my RDBMS, that data will be distributed here. Suppose some records here, some here, some here, some here. They will not be stored as a single file. Every data which we are bringing into Hadoop system, it is stored like a distributed file system. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सीक्वेंशियल होता है या मतलब वो मैं आपको जब HDFS करेंगे, कहीं जब HDFS करेंगे, then we'll be able to understand. But sequentially नहीं होता है. It is based on some criteria which is determined by a master node. इनका एक master node होता है, वो decide करता है actually. Okay. Where to place the files after splitting. So it's not like a sequential. Any data can go to any file, any node. और उसका reference point main node पे we are saving it. So that is called metadata. So that we'll understand when we do HDFS in detail. But the idea is that we are storing this data in HDFS. Now, how the data will come to HDFS? कोई अपने आप तो आएगा नहीं. There is some APIs, and those APIs are called, for structured data we are using Scoop, and for unstructured data we are using Flume. So these are inbuilt Hadoop tools. They are good for transferring your structured data into a Hadoop system or any unstructured data from different sources. Like if you connect to Twitter, Flume can read data from Twitter and write to your HDFS. So जितने भी नए tweets generate हो रहे हैं, you can insert into your HDFS file system. So many files will be created and they'll be get stored. So once the data comes into Hadoop, then what is the next step? Tell me. Data store करने के बाद what is the next step? Segregation, data segregation. But that is a process, na? So that is called computing. Segregation करना है या फिर you want to do veracity option, whatever you want to do, you want to run some program process. Cleaning. Cleaning is also a process only, na? Whatever cleaning you're doing, or you are doing any application you're running. So it's all a part of your process programming. Okay. So that is called distributed computing, because you are processing data parallelly, right? And that has been done by two separate technologies. One is MapReduce and Spark or Spark. Not you can use either of them. Both of them are good enough to handle your distributed data, but both of them have a lot of difference in between. So when we cover MapReduce and Spark, that time we learn. But both are distributed algorithms. They can handle distributed data very easily, and they can get you the output. So you run the query in MapReduce or Spark, you'll get the result. So you'll be creating various stages. You'll be passing your data through various stages. Somebody said that you have to do data cleansing. So that could be stage 0. So you are performing some cleansing on some data like, social media data or maybe some Facebook data, which is not okay.
When you start taking all structured data one by one, start taking email, CRM data. So many stages you'll be writing. Stage 1, stage 2, till you reach the last stage. So we cannot get this output in one program. एक program लिखने से output मिल जाएगा? Can we get the output in one program? No, sir. No, sir. Not possible, because the raw data is in a different format. जो final data चाहिए, that is in different format. So once you complete and you create the last stage, that is what we are looking for. And in the meantime, whatever stages we are generating, सबका data Hadoop में store होता है, HDFS में. So Hadoop can store whether the raw data or the intermediate data, even the final data. And once you generate your final data, you'll be running the export command, or you'll be sending the data to the machine learning department. How they will use your data for machine learning application. They will split your data, create a model, deploy the model, and get the result. So what is Hadoop doing here? Hadoop is playing a transformation role. And that too very quickly. If this transformation would not have happened quickly, we would not be able to, what do you call, get the machine learning application running. Would it be possible for us to run the machine learning application without Hadoop in this case? No, sir. No, sir. Because उतना बड़ा data 200 TB को process कौन करेगा? अगर we can try to process in a single machine, it will take ages. That is not what we want. We want to process the data as quick as possible, get the output, implement that output in our business. So Hadoop is working like a ELT tool. आपको पता है ETL क्या होता है? What is ETL? Yes. So Extract, transform, load, right? So here Hadoop is playing a role of ELT framework. Why ELT? It is extracting data from the source, loading data into Hadoop first, and then running the transformation. So Hadoop is called ELT, it is not ETL. That is one big difference here. Hadoop clusters are called ELT frameworks. सर Yeah, tell me. सर जैसे अपन स्ट्रक्चर्ड डेटा हैंडल करने के लिए पोस्टग्रेस और मायस्क्यूएल वो यूज करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड के लिए मोंगोडीबी और वो सब है, उसमें भी डेटा वेयर हाउसिंग होता है, उस वहाँ पे भी डेटा को ईटी और ईएलटी ऑपरेशन करते हैं. तो सर हडूप और इनमें मतलब कौन से सिनेरियो में कंपनीज प्रीफर करती है कि हमें मोंगोडीबी यूज करना है या फिर डेटा वेयर हाउसिंग, उसमें मतलब जो टेक्नोलॉजी. डेटा वेयर हाउसिंग एक आपका कॉन्सेप्ट हो गया. अच्छा, डेटा वेयर हाउसिंग इज नॉट अ लैंग्वेज, एक कॉन्सेप्ट है वो. Now let me open data warehousing also. डेटा वेयर हाउस में क्या होता है आप लोग बता सकते हो कोई? What is data warehousing? Data warehousing normally we use ETL tools. Data warehouse का मतलब होता है कि we are creating set of tables which are having less amount of data. Maybe we are summarizing the data. Data को summary करके we are storing in data warehouse. Because if I summarize the data, I can be able to use the data much faster in my analytical reporting instead of raw data. Raw data पे if I run the query, I'll be taking lot of data, lot of time to process it.
This part you understood, data warehousing? हाँ मतलब सर ये कह रहा था कि जो मोंगो डीबी वो सब है ना, वो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हैंडल करते हैं ना, और हाँ, वो लार्ज वॉल्यूम। that is अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोले तो एक तरह से जेसन डेटा फॉर्मेट। हाँ सर ये एक बार ईआरपी बताना सर वापस थोड़ा। ईआरपी मतलब? लेफ्ट साइड में ईआरपी। हाँ, ईआरपी इज अ फॉर्म ऑफ डेटा ना। ईआरपी मतलब आपका जो डेटाबेस का कोई ईआरपी डेटा रहेगा, दैट इज अ डेटा। बट आपको डेटा वेयरहाउस का मतलब पता है क्या? हाँ सर। क्या होता है डेटा वेयरहाउस? मतलब व्हाई डू वी यूज डेटा वेयरहाउस? पहली बात तो आप मुझे नटशेल में बता दो, डेटा वेयरहाउस को यूज क्यों करते हैं? मेरे को अगर प्रोग्राम रन करना है मुझे, तो मैं रॉ डेटा पे रन करूंगा ना, सीआरएम डेटा, बिलिंग पे। व्हाई वुड आई रन द प्रोग्राम ऑन डेटा वेयरहाउस? उसका फायदा क्या है? ताकि प्रोसेस थोड़ा फास्ट रहे। रिलेटेड डेटा स्टोर कर। ठीक है, और रिलेटेड डेटा स्टोर होते हैं। हाँ, सो डेटा विल गेट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे आप उसको मिनिमाइज करते हैं वॉल्यूम में। डेटा का जो स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं होता है, दैट इज द टोटल वैल्यू डज नॉट गेट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेबल बनाया सेल्स का, और उसमें एक कस्टमर आईडी है C1, और C1 ने प्रोडक्ट्स बहुत सारे खरीदे, प्रोडक्ट्स P1 P2 अलग अलग दिनों पे, P1 सो 100 200 300, फिर P1 का अगेन 400 हुआ अलग अलग तारीख पे, एंड 200। सो मैं इसको क्या करूंगा, समरी बना के यहाँ पे स्टोर करूंगा डेटा वेयरहाउस में। C1 P1 और P1 का टोटल यहाँ पे ऐड कर लूंगा, 100 प्लस 400 500। So depending upon my dimensions, like here my dimensions are customer ID and product, उसका uniqueness बना के I can add the values। तो मैंने 100 और 400 ऐड कर दिया P1 के लिए। Similarly C1 P2 I can add 200 plus 200 400, and C1 P3 only 300। So यहाँ पर 5 records है, यहाँ पे only 3 records। So this way millions of transactions can be converged into one record on their combination। So you can easily access, because आपका total change नहीं हो रहा है, total वही है 1200, total आपका change नहीं होना चाहिए, but number of records we are reducing because we are summarizing them। तो अगर किसी को कस्टमर 1 और P1 का कॉम्बिनेशन का रिपोर्ट चाहिए, so you will get this output ना, without any doing calculation from the data warehouse। डेटा वेयरहाउस में कितने टाइप की टेबल्स होती हैं? Anybody? There are 2 types of tables, dimension tables and fact table। देखो, so fact table के अंदर we are storing the measurements, total numbers, quantity, sale, जो भी total ऐड करना है ना। So यहाँ पर what are we doing? We are creating a uniqueness on country ID, city ID, employee ID and product ID। So इन 4 कॉलम का uniqueness बना के we are adding up the quantity and the sale। और उसके कंट्री आईडी का अगर नेम चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वी कैन हैव अ डिमेंशन टेबल। सो दीज आर कॉल्ड योर डिमेंशन टेबल्स। एंड जो फैक्ट टेबल होता है उसके अंदर प्योर नंबर स्टोर होते हैं बेस्ड ऑन द डिमेंशन आईडीज। सो नाउ इन दिस डिजाइन, इफ आई वांट टू ड्रॉ फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री आईडी, particular product ID, how much quantity I've sold, so easily I can, within few seconds I can withdraw that, I can draw that result। But if the same thing I try to do on the raw data, it will take more time because I might be having millions of records। But यहाँ पे क्या किया हमने,
इस कॉम्बिनेशन का हमने एक ही रिकॉर्ड बना दिया. For country ID, for that city, for that employee, for that product, we have made one record in this uniqueness. You're able to get the point. Fact table का uniqueness क्या होता है यहाँ पे? Yes, sir. We are defining a uniqueness for 4 dimensions. और उसके basis पे you're adding the numbers. So now, isn't this opposite to normalization? is it opposite to norm? But we are not worried about normalization. Now we are worried about time. How much Okay. time we want to spend. Why Okay, you okay. want to spend on millions of records? Tell me. Why would you like to spend millions of records in your raw table when you can summarize and keep them in your warehouse? Yes, sir, you are correct. Just I wanted to know that is it opposite to normalization or not? Huh, but whether it is normalized or denormalized, I'm not worried about. I'm just trying to make it in a store in such a way that my data retrieval becomes very fast here. Yes, sir. If that is the motive, then this is the correct way. That is the only motive. Yes. That is the only motive, because if I'm running, if I've got millions of records in the raw data, and if I run any query on the raw data, it will take too much time. So how will I generate those dashboards in my Tableau or another dashboards? And the management will not be able to generate or get the right information on time. So that is what ETL does. ETL transforms this data. So it takes the data from the raw, run the queries, and then loads your data into warehouse. This is what ETL does. So normally in ETL, we are using what? Structured data, 99%. Now tell me what is your question? Like you were saying data warehousing, right? So आपने data warehouse का नाम दिया तो मैंने आपको पूरा data warehouse concept समझा दिया. So data warehouse is a concept. MongoDB और बाकी जो आपने जो कहा था MongoDB and Hadoop, these are your tools for processing data. Like MySQL is a tool. So MySQL is working on a single platform. There you can't do distributed computing. Can we do distributed computing on Postgres, MySQL? No. MongoDB we can do. MongoDB is also distributed computing like Hadoop only. मतलब MongoDB में वही ऑपरेशन कर सकते हैं जो Hadoop से कर रहे हैं. नहीं. But उसका जो intake है ना MongoDB का, वो एक particular file format का intake. अच्छा, JSON और जो object. हाँ, object oriented या फिर जो भी आप खोलो JSON है या फिर CSV, we can import that data. But हर तरह का data MongoDB नहीं ले पाएगा. You have to first transform the data. अच्छा. But Hadoop में we can store any type of data without any problem. तो यहाँ पे कोई वो there is no limitation, there is no restriction के that in Hadoop we can store only this type of data. Okay, sir. वही जानना. That is the biggest advantage in Hadoop we have. But हर tool का अपना एक use होता है. Everybody uses. MongoDB is like a NoSQL database. So इसका purpose अलग है. Hadoop का purpose अलग है. जहाँ MongoDB use हो सकता है वहाँ पे आप Hadoop नहीं use नहीं कर पाएंगे. जहाँ Hadoop use करना है वहाँ MongoDB use नहीं कर पाएंगे. So that is what we have to learn, the technology part. So when you learn all these different technologies, then you will be able to find the difference. कि भाई when to use which technology. You can't say that okay Hadoop की जगह MongoDB use कर लेते हैं. ऐसे नहीं चलता है. Every technology has its advantage and disadvantage. So yeah, as per the advantage and disadvantage, we should be using the right technology. तो क्या होगा? After 6 months, you'll be squaring up. You'll be coming back to the same new technology and then using it again. So entire 6 months effort will go in vain. जी sir. So that is the objective. और बोलिए. Anyone has any questions? So this entire process is called what? Big data analytics. See. So whatever we have done right now in the banking domain, we have done big data analytics. So we have taken the raw data. As you can see, this is all raw data.
This is all raw data. So we send this data to some big data platform like Hadoop or maybe Spark, you can say. Hadoop and MapReduce on Spark. And then we are returning some output and then using some dashboards, Tableau, machine learning. आजकल Python pandas भी चल रहे हैं. Pandas you can use for analysis. So once you get the data in this form, it becomes very easy for us to use in the processable form by any analytical tool. This is a major challenge, how to transform terabytes and terabytes of data in the format which we are looking for. So it could be machine learning, it could be BI tool. Now suppose, let me give you example for data warehouse only. कल को ये डेटा बन जाता है आपका 500 TB. Will this ETL work? No. काम ही नहीं करेगा ETL. So what will you do here? ETL की जगह पर you will deploy Hadoop. And Hadoop will write data to your data warehouse. Am I right, everyone? Will ETL work for 500 TB data or 1000 TB data, suppose? उसकी डेटा वॉल्यूम हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं होगी ना. हाँ, कर ही नहीं पाएगा वो. इसलिए Hadoop. इसलिए then we have to change the framework which can process our data faster. जी सर. So we can now shift to Hadoop system which can allow us to process data faster because time is important. अगर एक फाइल को प्रोसेस करेंगे ETL, तो बहुत टाइम लग जाएगा. We can spend days and days. तो रिपोर्ट कब बनाएंगे, एनालाइज कब करेंगे? हाँ सर. So that is why we can shift this ETL to ELT. We will be shifting to ETL from ETL to now ELT framework. Because Hadoop में we can do parallel computing, fast processing करके we can get the result and we can write it to data warehouse. So that is the objective. To process your data as fast as possible, कम समय में you should be able to generate the output. Because remember, time is important. Time is the key. Business में time ही important होता है. If any action you don't take in time, you are losing that opportunity. So in any business, time is important. Time is key. So whatever action you need to take, अगर आपने time पे action लिया, so you can benefit. Time निकलने के बाद आपने कोई action लिया, तो you will not gain much. Timing is important in any business environment. And for that, you need to get information on time. और information time पे लाने के लिए आपको processing capacity आपकी बहुत fast होनी चाहिए. Your data size could be anything. You can't complain कि मेरा data बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूँ? That is not the way to run your organization. Now we have solutions, so we can now process data faster by using these distributed platforms. जी सर. Okay, so we'll meet after break. Any questions है किसी को? Tell me if you have any questions. Sir, the Hadoop system will first process, will first store the data, then transform the data, and it will be stored in data warehouse. पहले store करेगा, फिर transform करेगा, then you can write an application to transfer it to data warehouse. Data warehouse. Then after that we can use it for analysis purpose. हाँ, वो भी एक बार उसके बाद data warehouse में आके then you can use it like a normal data warehouse ना. Okay. Okay, sir. Thank you. हेलो Yeah, tell me. सर, बैच एनालिटिक्स के कंटेक्स्ट में मतलब बिग डेटा का जो 4 Bs है ना, तो वो वेलोसिटी डेटा तो वेलोसिटी में जनरेट नहीं हो रहा ना सर.
नहीं, वेलोसिटी और रियल टाइम के लिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, रियल टाइम एप्लीकेशंस। अच्छा मैंने आपको खाली 3 वी आज सिखाया है, वॉल्यूम, वेराइटी एंड वेरासिटी। We have never covered velocity. Velocity means real time. तो रियल टाइम एप्लीकेशंस अलग तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक स्टॉक मार्केट डेटा को एनालाइज करना रियल टाइम में, या कोई सेंसर हो, आईओटी ऑब्जेक्ट्स हुआ। तो जो हिस्टोरिकल डेटा है वो तो बिग डेटा कंसीडर नहीं होगा ना? क्यों, वही तो बिग डेटा होगा, वॉल्यूम है ना उसमें हिस्टोरिकल डेटा में। वेलोसिटी नहीं है ना सर? चारों होना जरूरी नहीं है, कोई भी एक भी रहेगा तो वो बिग डेटा माना जाएगा, चारों होना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो एक एक भी हुआ तो हाँ, एक भी हुआ तो दैट इज बिग डेटा। ओके, डोंट बी अंडर इंप्रेशन के चारों होना चाहिए, दैट इज नॉट द आइडिया। प्लीज रिमेंबर एवरीवन, गुड यू आस्क्ड मी। Any one V is applicable on data that is big data. Volume या variety, suppose आपका 500 TB स्ट्रक्चर डेटा है, उसमें वैरायटी तो हुआ नहीं, खाली एक ही सिंगल स्ट्रक्चर डेटा है, बट वॉल्यूम तो है ना 500 TB। सो दैट डेटा इज बिग, उसको बिग डेटा नहीं बोलोगे 500 टेराबाइट को। यस देन तो अगर एक सिंगल वी भी एप्लीकेबल हुआ ना आपका डेटा पे, दैट डेटा विल बी क्लासिफाइड एज बिग डेटा। सर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में अगर नोड फेलियर होता है तो? हाँ होते हैं, नोड फेलियर होते हैं, वो मैनेज करेंगे हम लोग HDFS में। क्यों नहीं होते, नोड फेलियर होंगे ना, बिकॉज वो तो एक नेचुरल चीज है। फिर से मैं मतलब नोड फेलियर हुआ तो प्रोसेसिंग होगा नहीं ना? हाँ वो तो सब फिर प्रॉब्लम से है, चैलेंजेस है ना, मैं बता रहा हूँ। चालू करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, वो चैलेंजेस है, डोंट वरी, विल डिस्कस दैट व्हेन वी कवर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा। बट आपने सही पॉइंट उठाया है, द नोड फेलियर कैन हैपन, बिकॉज अगर आपका 500 नोड का क्लस्टर है, यू कैन नॉट गारंटी का एवरी नोड विल बी वर्किंग, कोई भी नोड फेल हो सकता है कभी भी। सर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का एक लिमिटेशन भी रहेगा ना, अगर कुछ डेटा प्रोसेसिंग को दिया है, ठीक है, उसका टाइम अगर एक हाफ एन आवर का प्रोसेसिंग चालू है और आपने को वो ब्रेक करना है प्रोसेसिंग, तो वो तो सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं रहेगा ना उसका, हर एक क्लस्टर पे प्रोसेस ब्रेकअप हो जाएगा ना उसका। हाँ, अगर आपको पूरा प्रोसेस स्टॉप करना है तो आप पूरा स्टॉप कर सकते हो ना, उसमें नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो हर मशीन पे जाके स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस। सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है क्या वो? हाँ वो एक रहता है, बिकॉज आपको हर मशीन पे जाके काम नहीं करना पड़ता है, आपको मास्टर नोड पे जाके उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, और मास्टर नोड हैंडल करता है इंटरनली। नहीं तो अपन तो पागल हो जाएंगे अगर 500 मशीन पे जाके इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। सेंट्रलाइज कंट्रोल। हाँ, वो एक्चुअली एक मशीन होता है, सेंट्रल मशीन, दैट इज हैंडलिंग द क्लस्टर, स्टोरिंग पर्पस के लिए भी और प्रोसेसिंग पर्पस के लिए भी। और सर वो आप बोल रहे थे ना क्लाउड और क्लस्टर, तो वो थोड़ा सेम ही है, लेकिन सर क्लस्टर का तो लिमिटेशन रहेगा ना, अपन कितने तक ये कर सकते हैं? नहीं, मैं तो देखा है लोगों ने 1 लाख यूनिट 2 लाख यूनिट तक बना सकते हैं क्लस्टर। लेकिन कंपेयर टू क्लाउड तो अनलिमिटेड कर सकते हैं ना अपन, मतलब ये भी एक तरह का क्लाउड ही है ना यार, प्राइवेट क्लाउड है आपका, ये वो ऊपर से आ रहा है कि ये आप प्रीमाइसेस में आप बिठा रहे हो तो ऑन आपका प्राइवेट क्लाउड है, वो पब्लिक क्लाउड है। ये घरेलू क्लाउड है, बजा का। That is your in-house, this is in-house cloud, that is your public cloud. Ultimately दोनों एक ही ultimately you are using what? IP एड्रेस ना, हर मशीन का IP एड्रेस पे काम कर रहा है। कंपेयर टू AWS क्लाउड, AWS तो मतलब अनलिमिटेड है वो, लेकिन अनलिमिटेड मतलब बिकॉज ऑफ दे हैव लॉट ऑफ मनी इन्वेस्टेड। अगर आपको अगर आप सपोज गूगल है, आप गूगल है या फिर याहू है, उनके अपने क्लाउड है ना, वो थोड़ा AWS पे काम करेंगे यार, उन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है। फेसबुक का अपना क्लाउड, अपना सेटअप है, दे हैव लाइक लैक्स ऑफ मशीन्स। नहीं तो फेसबुक के पास जो व्हाट्सएप डेटा है, आपको पता है कितना व्हाट्सएप डेटा जनरेट होता है रोज का? कहाँ स्टोर होता होगा? कहीं तो स्टोर होता होगा ना व्हाट्सएप का डेटा एवरी डे, पूरे वर्ल्ड में व्हाट्सएप यूज होता है। वो भी क्लाउड यूज करते होंगे, उनका अपना नेटवर्क है ना, अपना सेटअप है फेसबुक का, डेटा सेंटर्स है। हाँ डेटा सेंटर्स हैं, मशीन ऐड करते हैं, पुराना डेटा को ट्रांसफर करते हैं दूसरे मशीन पे, तो उनका कॉस्ट एवरी डे इंक्रीज होता है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू।
these data companies, the costs are not so limited. The cost is very high. सर डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज और ग्रिड में क्या फर्क देता है? ग्रिड में क्या होता है मुझे पता नहीं, ग्रिड में मैंने कभी काम नहीं किया, बट एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज ग्रिड. ग्रिड में क्या होता है, एक ही मशीन पे स्टोर होता है. पता नहीं सर. बट यहाँ पर वी आर स्पीकिंग अबाउट डिफरेंट मशीन्स. सर ये थ्योरी सेशन चलेगा ज्यादातर या लैब मतलब प्रैक्टिकल लैब वगैरह जैसे हडूप वगैरह का? आज तो फर्स्ट डे है ना, तो फर्स्ट डे पे तो थ्योरी होगा. लैब आपका कल आपको मिलेगा, तो कल लैब चालू कर देंगे. How can we start lab without getting a lab, without lab being allocated? नहीं मतलब कुछ डाउट्स आ रहा था मतलब जैसे हडूप क्लस्टर वगैरह मतलब हाँ, वो जब लैब पे काम करेंगे तो आपका जो भी रिमेनिंग डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा. दैट आई कैन गारंटी. बट अगर भी आपको जो भी डाउट है पूछ लो. यस सर. डोंट कीप एनी. हाँ बोलिए सर वो मशीन टू मशीन वो कम्युनिकेशन वाला एक बार बताइए ना, वो पेंट में से. मशीन टू मशीन में क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पर आप एक की जनरेट करते हैं. कोई लंबा सा की होता है. की मतलब देयर आर मेनी कैरेक्टर्स, कुछ 100-150 कैरेक्टर होते हैं, उसको की बोलते हैं. वो जो सम की है वो यहाँ पे इसके मशीन में कहीं एक फाइल में स्टोर होता है, ऑथराइज कीज के फाइल में. So whenever we are connecting to this machine, अगर वो authorized keys मैच करेगा B के की के साथ, तो I can communicate without any password. Otherwise we will not be able to communicate. तो यहाँ पर पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है. Because key is working like a password. सर वो की कैसे चेक होगी, मतलब हर बार चेक होगी क्या? हाँ, वो पहले जैसे आप कम्युनिकेट उसको कनेक्ट करोगे तो आप चेक तो करनी पड़ेगी ना, वो तो इंटरनल मैकेनिज्म. ओके, एक बार चेक होगी, फिर उसके बाद नहीं जरूरत ना उसको चेक करने की बार बार? क्यों नहीं, अगर आपका काम हो गया, आप वापस आ गए, आपका कनेक्शन टूट गया. नहीं, अगर एक बार कनेक्शन किया तो फिर हाँ, बाकी आप काम कर सकते हो. हाँ. बट आपका काम खत्म होने के बाद आपने कनेक्शन तोड़ दिया, देन उसके बाद आपको दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा. यस यस यस, गॉट इट. सर ये की सेम ही रहेगी क्या, टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगी सर? नहीं, सेम रहता है. दैट बी का जो की जनरेट हुआ है वो ए किसी भी मशीन में स्टोर होगा. जैसे ये की ए में स्टोर होगा, सी में स्टोर होगा, डी में स्टोर होगा, सेम की. तो अगर डी को बी से बात करना है तो वो की होना चाहिए डी के पास, इसका की, या फिर सी के पास होना चाहिए. सो दिस की ऑफ बी शुड बी देयर विद ऑल द अदर मशीन्स. दिस इज व्हाट वी कॉल सिक्योर्ड शेल एनवायरनमेंट. सर और वो जो उसका कंप्यूटिंग रहता है, जैसे वो नोड फेलियर का उसने बोला, सो अगर एक केस में 500 नोड्स है और 250th वाला नोड वो फेल हो गया, राइट, तो डज द रेस्ट ऑफ द 256 257 वो चलते हैं क्या? हाँ चलेंगे ना, सब इंडिविजुअल मशीन है, सेपरेट मशीन है. जैसे अपन अभी सब एक दूसरे के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपका लैपटॉप बंद हो गया तो मेरे लैपटॉप ना बंद हो जाएगा. यस सर. बट हम लोग एक ही नेटवर्क में सपोज, बट आपका मशीन डाउन हुआ, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अदर मशीन ना. नेटवर्क तो एक ही है, बट इट इज नॉट अ लैन नेटवर्क नहीं है कि भाई वो मशीन फेल हुआ तो उसके बाद वाली सब मशीन फेल हो जाएंगी. दे आर ऑल कनेक्टेड थ्रू आईपी एड्रेसेस. नहीं, बट आई एम मतलब ऐसे कि अभी वो 500 नोड्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं. हाँ, और सब लोग एक दूसरे के डेटा पे मतलब डिपेंडेंट है. जब भी 258 वाला मशीन एक कुछ तो कंप्लीट करेगा, हाँ, तो फिर उसका वो एक रास्ता है. जो मशीन फेल हुआ है ना, उसको उस डेटा को रिकवर कैसे करने का उसका एक रास्ता है हडूप फाइल सिस्टम. तो वो रास्ता मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी. बट दैट इज कॉल्ड फॉल्ट टॉलरेंस. उसको उस रास्ते को वी हैव टू फाइंड आउट हाउ टू डील विथ मशीन फेलियर्स. एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा ब्रेक ले लें. थोड़ा सा नहीं, पूरा ब्रेक लेंगे. थोड़ा सा ब्रेक का क्या मतलब है, मेरा गला बैठ गया है पढ़ाते पढ़ाते. हाफ एन आवर है सर. हाफ एन आवर तो ऑफिशियल ब्रेक है ना. ज्यादा लो. सो विल कनेक्ट एट, आप लोग डिनर विनर लेके आ जाओ. कैन बी कनेक्टेड 8:40? यस सर. यस सर. यस. क्या? यस. क्योंकि मैंने कोई बीच में अपना पर्सनल ब्रेक भी नहीं लिया है, बिकॉज
So right now we are looking at the ecosystem of Hadoop and what are the different tools and components we have. So we are not using one technology in Hadoop. There are different technologies we are using in Hadoop system. And the most prominent one are HDFS, which is your distributed storage system. So you can call it as a core component. Because इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा. It's a core component. And there's another core component called YARN MapReduce. So whenever we process data, we are using YARN and MapReduce in Hadoop system. Now, what is YARN and what is MapReduce, we'll look at later on. But right now, they are basically meant for distributed computing. Ecosystem क्या होता है? Ecosystem means आपके पास बहुत सारे tools हैं उस framework में. अभी आप Java use करोगे तो Java is a single language tool, right? So it's a combination, it's a basket of tools. Ecosystem मतलब basket दे रहा हूँ मैं आपको. So Hadoop के अंदर जब भी Hadoop अपन बात करते हैं, we are storing data on Hadoop. So Hadoop के अंदर बहुत सारे tools होते हैं. हर tool का अपना एक role होता है. मतलब they play important role. So if I am asking you that I am storing data on Hadoop, तो actually कौन सा tool use कर रहा हूँ मैं? नहीं पता. HDFS ना? अच्छा HDFS हाँ. HDFS is meant for storing data. तो उसका काम है store करना. डेटा को प्रोसेस करने का काम है YARN MapReduce का. स्कूप एंड फ्लूम का काम है डेटा को बाहर से लेके आना Hadoop सिस्टम में. इफ यू लुक एट माय डेटा स्ट्रक्चर जो मैंने ब्रेक से पहले किया है बैंकिंग का, आई एम यूजिंग स्कूप एंड फ्लूम. उसका काम क्या है स्कूप एंड फ्लूम का? टू इंजेस्ट डेटा इनटू Hadoop सिस्टम. So Hadoop के अंदर बहुत सारे tools है which is making you a complete ecosystem. It's not about one tool. So Scoop and Flume are meant for data ingestion. Scoop is meant for pulling structured data. So कोई भी structured data हो आपका MySQL में, Teradata, Postgres. We will be able to pull that data by Scoop. जी सर. और Flume का काम है to Unstructured data. just unstructured data like streaming data also. So these are two important tools, Flume and Scoop. बाद में Hive is very important. Hive में मतलब you can write your SQL queries. Normally Hadoop is written in Java, so it's a Java language which is used. And MapReduce भी Java में process होता है, so you have to write Java codes here. But now in case I don't want to write any Java queries, Java codes are very lengthy. So what we can use another tool, Hive. वो Hive क्या करेगा? It will allow you to write SQL queries on flat file data. So how that is possible? Because normally SQL queries are implemented on database, on DBs. So यहाँ पे SQL query we are running on flat file. So there has to be some logic behind, so that Hive is interface which is converting your SQL queries into Java code. So whenever we use Hive, हम लोग लिखेंगे queries SQL में. Suppose we write SQL queries here, but Hive will convert them query into Java programs internally. So it is called SQL interface. आपको अगर Java code नहीं लिखना है तो we can write queries in SQL, and then also we can process data. So automatically that SQL query will be converted into Java program and they will get processed. So just like Hive, we have another tool, Pig, which is a scripting language. And then we can also have machine learning like Mouth, R and all that. HBase is a NoSQL database. So this we have to learn how to use NoSQL in our applications. So we'll be focusing more on the main tools like HDFS, Yarn, Hive, HBase. Instead of Uzi, we might be using Airflow. So Uzi का actually काम होता है data automation करना. We can write programs in a program,
and we can automate the job. So if you want to run the job every night, so you can write a code in OZ, and then OZ will implement that piece of code every night as a scheduler job. So we can use Airflow also instead of OZ. So that we have to learn. So this is why we called ecosystem. Ecosystem means there are many tools, and each of these tools have their own responsibility of running some job, some action. So collectively it is called Hadoop. So somebody says I'm processing data on Hadoop, that means I'm using Yarn and MapReduce. If somebody says that I'm storing data on Hadoop, that means they are using HDFS. And they are pulling data into Hadoop system by Scoop and Flume. So you can ingest data. You can write SQL queries in Hive. That is very important part of our courseware. You can manage your data warehouse also through Hive. So that is something interesting we'll be learning. Are you able to follow everyone? What is this ecosystem means? Ecosystem का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? It's a combination of different tools which are working in together on different options, and which are able to get the final result. So if you see my example also, I'm using so many tools. I'm using Scoop and Flume. I'm using HDFS, MapReduce, Spark. उसके बाद जाके मेरा data process होता है. So I'm using these at least 5 tools. And if I want to automate my job, I will be using OZ also or Airflow. So if I want to automate this job, like if I want to pull it data every day, if this one time, then it is okay. If I want to pull it every day, then I have to use, suppose if I want working on data warehousing, so वहाँ पे मुझे हर दिन का data लेके आना पड़ेगा cluster में. So in that case, I'll be using also OZN or Airflow system. So in a nutshell, you can say that in a system, sir. Sorry, come again. क्या बोल रहे हैं आप लोग? कौन सा system बोला sir वापस? Airflow. OZ या फिर Airflow. अगर आपको ऑटोमेट करना है, सपोज आपको कोई जॉब एवरीडे रन करना है, सो या तो आप मैन्युअली रन करेंगे उसको या फिर शेड्यूलर में डाल देंगे. विच इज बेटर ऑप्शन? शेड्यूलर में डाल देंगे ना, तो दैट इज बेटर बिकॉज व्हाई यू वांट टू रन इट एवरीडे. सपोज रात को 12 बजे आपको प्रोसेस चालू करना है, तो जैसे ही द टाइम विल रीच 12 o'clock, the process will start immediately on your cluster. So you can manage your entire, you don't have to run it manually then. For that we have OZ, or we can use Airflow. So that we have two separate systems for managing our workflow. You got your answer? You got your answer? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So let's now start with HDFS, which is the first important tool, Hadoop distributed file system, where we learn how the data is stored distributedly and what are the different challenges we have in that. Like somebody told me that I can lose one of these nodes at runtime. So that is very common feature. Loss of nodes at runtime is a very common feature in Hadoop system or any other distributed system. Even in MongoDB, you can lose. कोई भी machine की guarantee नहीं होती कि ये machine हमेशा चलेगी. But in spite of that, your data should not be lost. That is the challenge. भले machine बंद पड़ जाए, data loss नहीं होना चाहिए. So how can we meet those challenges? So let's now see the framework of HDFS. So HDFS, as you know, the full form is Hadoop Distributed File System, and it has a master-slave architecture. In the banking example, I was discussing this, that there is a central node or a master node, which is going to manage my entire cluster here. So that master node is called name node here.
Now, what is the role of a master node? Master node is not going to store any physical data. Whatever data we will be uploading, that data we will not be storing on master. That data will go to data nodes, to the slave worker nodes, you can say. And you can see here there are many worker nodes in the cluster. If you count them, there are total 40. So actual data is stored on data nodes, on worker nodes. But on master node, we will be controlling the entire cluster. That is the first job of name node. And we will be keeping metadata. Now, what is metadata? That we'll understand in a short while. But we will be storing metadata on our name node. And plus, name node will decide where the files will be stored. So somebody asked me earlier that are we storing in a sequential form? No. Most of decision power name node ka hai, where to keep the files on my data nodes. So if I talk about each node capacity, suppose each node has 10 TB here. So my cluster size becomes 40 into 10, 400 terabytes. We don't count name node capacity. Suppose name node is having 55 TB. And this is a backup name node, secondary name node. Backup master node. Suppose iska bhi 5 TB hai. We don't consider the storage capacity of master node in the cluster size. The reason is simple. We are not storing any physical actual data on the master nodes. On the master node, we are storing only metadata. Is the architecture okay with everyone? Yes, sir. Basically, we have one master node और वो master node पूरे cluster को monitor कर रहा है, manage कर रहा है. It decides where the files will be written on which node, split करके. So all that decision power is done by the name node. So name node is basically having complete information about all these machines in their cluster, in their repository, you can say. It keeps a track of every data node, how much name node, how much data is stored on each node. So it keeps a total track. हर machine पे कितनी capacity है, कितने files installed है, बाकी कितनी extra space available है. So when you want to upload any new files, they can be reside on those new, on the same existing data nodes. Now we have a separate machine called client. Client का काम है to interact with the cluster. You cannot work inside the cluster. किसी भी data node या name node पे आप लोग directly काम नहीं कर सकते. Whatever instruction you'll be giving from a client machine. But actual terms में client machine पे भी direct काम नहीं होता है. जैसे आपकी personal machine है, you get a PuTTY access. Have you ever guys worked on PuTTY? What is PuTTY? Yes, sir. Yes, sir. No idea, sir. Yes, sir. PuTTY is a remote access tool. It connects to a remote machine. And you can get a remote access of that machine. Sir, what is difference between primary name node and secondary name सर node? एक बार वापस पट्टी समझा देना क्या होता है. एक करके पहले तो name node is a master node, right? उसका काम क्या है? मैनेज करना पूरे क्लस्टर को और उस पे मेटाडाटा स्टोर करना. नाउ व्हाट इज मेटाडाटा? मैं अभी तक वहां पहुंचा नहीं. Sir, it is information about files, information about data. Data about data, you can say. Information about data, you can say. But पूरी पिक्चर आपको जब समझ में आएगी जब मैं पूरा एक फ्लो चार्ट समझाऊंगा कि हाउ द फाइल्स आर रिटन. सो टिल देन यू हैव टू वेट. बट उससे पहले वी हैव अ क्लाइंट मशीन, क्योंकि who will give the instruction to write the files, to download the files? We cannot work inside the cluster, right? Cluster तो आपका data center पे है, तो data center पे जाके काम थोड़ा करो. You would need some external machine. That machine is called client machine. Normally we also call them edge nodes.
इस एज नोड पे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जो मेन सॉफ्टवेयर है ना सारे क्लाइंट मशीन में इंस्टॉल होते हैं, जैसे हाइव हुआ, पिग हुआ, स्कूप हुआ। बिकॉज हडूप के ऊपर खाली डेटा स्टोर होता है और डेटा प्रोसेस होता है। ऑन दिस क्लस्टर देयर आर ओनली टू थिंग्स व्हिच हैपन, आइदर वी आर स्टोरिंग data distributedly, and processing data parallelly. There are only two activities which take place on the cluster. बाकी सारा काम आपका क्लाइंट मशीन करेगा, giving instruction for running a query, uploading data, downloading data set. So whatever you now on one client, I cannot give one person to one client because client machine maximum 3 या 4 होते हैं किसी भी organization. But if there are more people to work on the cluster, then you can give remote access to these client machines. And each one of them will get a home directory. You understand what is home directory in Unix? Home folder, home directory किसको बोलते हैं? Whenever you log on to any Unix platform, तो कहाँ पर आपका login ID, मतलब what is the PWD command? When you type PWD, तो current path क्या दिखाता है वो? root directory. Home directory. हाँ, so वो that is called home directory ना, root home /home/. Suppose my username is Sandeep, so automatically I'll end up there. Same thing is going to happen here with all the user. They will be all connected to their home directory by PuTTY. Now what is PuTTY? PuTTY is a tool by remote access, for remote access. So sitting on your laptop, you can work on your laptop and you can connect to the client machine through PuTTY. Because you cannot work directly on the client machine. अगर एक आदमी काम करेगा तो बाकी लोग कैसे करेंगे? So it is better we all connect to the client machine using PuTTY, and then each one of us can work separately on the cluster. So we'll be landing up in our home directory, and from there we can give the instruction, commands, whatever you have to do on the cluster. Is that okay, everyone? So client machine is basically a desktop, right? No, it's not a desktop. It's a physical, it's another node, you can say. Proper server होता है ये भी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, हाइव, पिग, स्कूप, फ्लूम, क्योंकि यू आर गोइंग टू रन द एप्लीकेशन थ्रू दैट सॉफ्टवेयर, राइट? अगर आपको हाइव टूल यूज करना है तो हाइव टूल कहाँ इंस्टॉल होगा? हडूप पे तो इंस्टॉल नहीं हो सकता। प्रोग्राम्स कहाँ लिखे जाते हैं? प्रोग्राम्स हम लोग क्लाइंट मशीन पे लिखते हैं, डेवलपमेंट क्लाइंट मशीन पे होता है, या तो अपनी मशीन पे लिखेंगे और फायर क्लाइंट मशीन से करेंगे। तो हमारे लैपटॉप से सिर्फ क्वेरीज जाते हैं, क्वेरीज नहीं जाते हैं। क्वेरीज हमारा लैपटॉप यूज ही नहीं होता है, हमने रिमोट एक्सेस ले रखा है क्लाइंट का। नहीं, while using PuTTY we send the whatever we function we have to do, right? But we have connected to that client and we are running on the client machine directly. We have taken the remote access. Okay. So we are using our machine just for interface, for the screen purpose. Okay. So we are working on the client machine directly, because one person cannot work, but many people can work on the same client by remote access. Everybody will be working in their personal home directory. Somebody would be working in home Sandeep, somebody would work in home Amit, and so on, home John. So everyone will get their own personal home directory. So they can upload files here. If they suppose आपने अपने laptop पे कोई program लिखा, you can transfer the files here, and from there you can execute. जो भी execution powers होगी वो client machine की होगी, आपके personal laptop की कुछ नहीं होगी. Because this is a dedicated machine to interact with the cluster. Whenever we connect to the cluster, we don't need any password because everything is being incorporated in the configuration files. So client is a dedicated machine. It connects to your cluster directly without any password. That is the importance of client.
So client is important machine. It is called also edge node. Some people call it gateways. क्लाइंट का एक्सेस बहुत कम लोगों को होगा। नहीं, सभी को होगा ना क्लाइंट का एक्सेस, नहीं तो आप लोग काम कैसे करेंगे? क्लाइंट का एक्सेस नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? हाउ विल यू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द क्लस्टर? क्लाइंट का एक्सेस नहीं करेंगे रिमोट से, पट्टी से, तो फिर काम कैसे करेंगे? बिकॉज इंस्ट्रक्शन तो क्लाइंट मशीन देगा। ये at this point is not clear, I think so, to everyone. Yes. The role of client. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So client is like a physical machine which is interacting with the cluster. मैंने previous slide में भी client का आपको जिक्र किया था. Just let me bring that. You can see there are many clients. So cluster can be only interacted with a client machine. मैं क्लस्टर के अंदर बैठ के काम नहीं कर सकता. आई कैन नॉट गो टू अ डेटा सेंटर टू गिव इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रक्शन कहां से दूंगा बताओ? अगर मैं डेटा सेंटर जाऊंगा नहीं तो डेटा अपने आप लोड हो जाएगा क्लस्टर पे. किसी ना किसी को तो क्लाइंट के थ्रू अपलोड करना पड़ेगा ना. क्लाइंट हैज टू डू ऑल दैट हार्ड वर्क, अपलोडिंग डेटा ऑन द क्लस्टर, रनिंग प्रोग्राम्स, फायरिंग कोड्स, फायरिंग क्वेरीज. हडूप का काम खाली स्टोर करना और प्रोसेस करना है. दैट्स इट. आप हडूप पे डायरेक्ट काम नहीं कर सकते. यू कैन नॉट वर्क ऑन एनी ऑफ दिस मशीन डायरेक्टली. आपको क्लाइंट के थ्रू ही एक्सेस मिलेगा हडूप पे. सो क्लाइंट विल इंटरैक्ट विद द क्लस्टर, वॉट एवर कमांड यू आर गिविंग. सपोज आपने फाइल अपलोड करी कोई भी, यू हैड अ टेबल ऑफ 1000 रिकॉर्ड्स. You ran one command और उस कमांड से आपने टेबल अपलोड करी. सो ये 200 रिकॉर्ड जब एक हर मशीन पे स्टोर होएगा, सो दैट इज नॉट द रोल ऑफ द क्लाइंट. क्लाइंट ने तो एक क्वेरी फायर कर दिया, पुट कमांड सपोज. बट द डेटा गेट्स रिसाइडेड इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म एंड क्लस्टर. सो how that will happen, that we'll be looking at shortly now. Similarly, if I want to process these 1000 records, I'll write a single query. Select some query. That single query will be run distributed on multiple nodes. I will not go and fire query on every machine. That is not possible. अगर 5000 मशीन रहेगी, मैं हर मशीन पे जाके थोड़ा query रन करूंगा. So for query purpose, we have yarn. So yarn का अपना एक master node है, resource manager, that handles the query part. Just like in HDFS, we have the main node called name node. Yarn में अलग एक master node है, resource manager. yarn क्या होता है? Yarn is for resource management system. वो processing में काम आता है. So right now, let us not jump to yarn and MapReduce. We are just sticking to storing the data. Just now I've spoken you, right? What is yarn? Yarn is what? It is a distributed processing framework. See. So let us not go into many things on day one. एक साथ बहुत सारी चीजें सीखने जाएंगे तो we'll not be able to understand. But in a nutshell, yarn is a part of your distributed processing framework. Without yarn, आप data process ही नहीं कर पाओगे. It's a compulsory part of your processing framework. And what role it plays, that we will be learning in a day or two. After finishing HDFS, my next target is yarn only. But before that, we need to understand what is the role of a client machine. Client machines are responsible for writing data, for reading data, for giving instruction for your programs. Whatever instructions we are giving from the client machine. Is it clear now? Client machine का role क्या है? Yes, sir. Data is stored and processed on the cluster. But client is going to give the instruction. कोई भी data load करना है, download करना है client पे Hadoop से, or you have to run some program. It has to be done through client machine only. Suppose we'll take one small example. I have a data with me on client machine. File name is abc.txt.
and the size of this file is 10 GB. Okay, I want to write this file to my cluster, Hadoop cluster. Now, to which node will I be writing data? Name node or data node? Name node. Data node, हाँ. Name node पे तो खाली metadata रहता है. Data node is actual data. Actual data will be written on data nodes only. Remember that. Now, how many data nodes I'll be using? Suppose her machine की capacity 10 TB है. So my file is not so big. Easily I can write this file on one node. So would that be a best practice, or should I be writing data on few nodes? So I give you three options. We would be writing on one node because 10 GB is not a very big file. Easily I can write on one node. Few nodes. And third option, I'm giving you all the nodes. Which is the best option? One node. One node. A few nodes. Few nodes, okay. So your logic is that your data is not so big, we can write on one node, right? Yes, sir. But अगर 10 GB भी है, 10 GB is also a big file. How will you do parallel computing? 10 GB कोई छोटा file तो है नहीं. 10 GB, 20 GB, 50 GB. It's not a very small file. It is not like KB or MB. पर सर उसके जो हैंडल करने की कैपेसिटी वो जो टीवीज का डेटा हैंडल कर सकता है, तो उसके लिए 10 GB तो काफी छोटा है. सर वो 10 TB स्टोरेज कैपेसिटी होगा ना सिर्फ. हाँ, 10 TB स्टोरेज कैपेसिटी. जिस आपका हार्ड डिस्क, आपका लैपटॉप 1 TB का होता है, तो ये नोड का कैपेसिटी 10 TB है. उसका प्रोसेसिंग पावर 10 TB थोड़ी होगा तो. हाँ, दैट इज अ लॉजिक. उसका हार्ड डिस्क कैपेसिटी 10 टेराबाइट्स है, उसका प्रोसेसिंग 10 TB थोड़ा है. So the best option is all the nodes. जितना मैं ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उतना जल्दी मुझे प्रोसेस होगा ना. मैंने एग्जांपल बताया था आपको 500 नोड का. हाँ सर. If I am distributing my data more parallelly, I can do parallel computing more. If I am keeping data on one machine only, तो बात तो एक ही बात हो गई. Then why I am using Hadoop? I can very well do it on my normal machine. पर Hadoop को यूज करने का लॉजिक ही नहीं रहा. So I'll be using as many nodes as possible. जितने भी nodes available है, I will try to distribute my data evenly across all the cluster nodes. Now let us understand how this distribution takes place, because it cannot be done randomly. It has to follow some principles. So there is a property in Hadoop called block size. और ये प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 128 MB. Right? Now the purpose of this default block size 128 MB is that we are going to split this file into multiples of 128. So 128, 128, 128 likewise will be creating many files. So if you divide 10 GB data by 120 MB, this will create how many files? 80 files. 80 files बन जाएंगे. And where is this all splitting happening on the client side before we write data to the cluster, because अपने को अभी पता नहीं कहाँ लिखना है. So we have to create these 80 files first on the client side. Now, can client write to any of these nodes directly? Do client has authority to write these files anywhere? Yes. The answer is no. That only name node decides. Name node is a deciding factor. कौन सी फाइल कौन से मशीन पे लिखी जाएगी, कौन सी फाइल कौन सी मशीन पे स्टोर होगी. We cannot decide. Client cannot decide. So what client will do, it will give the details to the name node, file name and the size. And your name node is to give every file a number, unique number.
that is called block ID. And every file will get a name like this, blk_block ID, for example, 1. No extension. Huh? So this is what we are creating file names. So I'll be creating 80 files here like this in my metadata. And client name node will decide kaun si file kahan rahegi, because it has to maintain the balance of the cluster, because already some data is there in the cluster. It needs to create a balance. So here it is going to give the IP address of every file, on which IP address that file will be ultimately get stored. Now this is what we call metadata for abc.txt. This complete information is called metadata. The file name and the location for abc.txt. So for this file, we have generated some data, some information, reference you can say. Now this metadata will be shared by to the client. And now client will write as per the instruction of the name node. Suppose BLK1 will be written here. BLK2 will be written here, maybe 5 year, 10 year, and so on. So we have 40 nodes and we have 80 files. So certainly we'll end up writing 2 files on every node. Am I right? Yes. We end up writing 2 files on every node. So now on every node, how much data we have? 256 MB. So tell me, should I process 256 MB on every node or 10 GB? 256. 256. So that is what we are planning to do. We distribute the data as much as possible on the cluster. More we distribute, more parallelism we can achieve, more faster process we can do. So what is 128 MB? It's a maximum limit of the file which we are creating on the cluster. It's an upper limit. But we can have files without less than 128 also. Suppose my original file was 300 MB. So when I upload this file, I'll create 3 files, 3 blocks, 128, 128 and 44. So the last file or the last block in your distribution of data may be equal to 128 or maybe less than 120. But in your entire cluster, you will not find any file which is crossing 128. So that is what block size does. It creates your maximum limit file so that you can process this data very fast. So one file is 1 unit, basically, you can say. So when we are processing data, we are processing 128 MB file by our processor. In the older days, this file limit was 64 MB, but now they have increased it to 128 because we have good quality hardware. So are you getting the point? At a time, we are processing only one file of 128 by a processor, and that too parallelly. So when I want to process this 10 GB file, how many programs will I be running here? 40. 80 now. 88. Because there are 80 files, 80 blocks. So maybe I'm having two processor here on every node. I'm having more processors, so I don't have to worry about. If these are machines are only single processor, then I have to run 40 in a cycle, 40 once, then again 40. But ultimately, I have to process 80 files. Either I do it in a sequential manner because depending upon the resources I'm having. If I have all the resources, I can run all 80 programs parallelly. That is what we intend to do with Hadoop. This is called distribution of data. And name node is यहाँ पे जो yeah. सर यहाँ पे जो ब्लॉक आईडीज क्रिएट हो रहे हैं वो किसके बेसिस पे क्रिएट हो रहे हैं? वो यूनिक नंबर है, वो सिस्टम डिसाइड करता है नेम नोड। आपको यूनिक नंबर मतलब फिक्स होता है क्या वो?
हाँ नंबर यूनिक रहेगा, वो यूनिक नंबर रहेगा, वो जो भी यूनिक नंबर जनरेट करता है। कोई भी नया ब्लॉक आईडी बनता है उसका यूनिक नंबर मिलता है उसको, हर फाइल को यूनिक नेम मिलता है, BLK_1, दैट इज अ नेम गिवन टू द फाइल। बट ये फाइल का इंफॉर्मेशन मेटाडेटा नेम नोड पे रहेगा, बट एक्चुअल फाइल कहाँ रहेंगी, आपका डेटा नोड पे। Sir, I had one question. क्लैरिटी नहीं है तो जरा पूछ लो, बिकॉज दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग, दिस इज लिटिल चैलेंजिंग। या टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन। अभी आपने वो abc.txt करके एक फाइल लिया है, हाँ we'll assume it's structured data, तो उसमें if एक रो में they have 5 columns and while you're putting this into 128 MB 128 MB, गुड आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, तो इट्स अ गुड लॉजिकल क्वेश्चन। सो उसमें क्या होगा, 128 MB में पूरा रिकॉर्ड नहीं आएगा, लास्ट रिकॉर्ड 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो वो फिर अलग अलग कंप्यूट कैसे कर लेंगे? हाँ वो एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, वो जब मैप प्रोड्यूस सीखेंगे तब देखेंगे, बट इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, क्योंकि अगर 5 कॉलम है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, प्रोफेशन, और उसने सिर्फ एज तक ही लिया। हाँ तो प्रोफेशन वाला डेटा अगले ब्लॉक में जाएगा। यू आर वेरी राइट, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि हडूप में फिजिकल स्प्लिट होता है, रिमेंबर, और ये फिजिकल स्प्लिट की वजह से वी आर एबल टू अपलोड एनी डेटा। अभी आपको समझ में आ रहा है हडूप पे एनी डेटा, हर टाइप का डेटा क्यों स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ फिजिकल स्प्लिट पैटर्न। कल को आप इमेज फाइल भी लेके आओगे ना, 1 GB का इमेज, सिंगल इमेज, उसकी भी 8 फाइल बन जाएंगी। आप बोलोगे एक ही इमेज है, फिर भी 8 फाइल बनेंगी उसकी। सो वो डेटा कैसे प्रोसेस होगा, आपने एक इमेज के 8 टुकड़े कर दिए, एक फोटोग्राफ के 8 टुकड़े कर दिए, बट डेटा विल बी स्टोर्ड लाइक दिस ओनली, 128 मैक्सिमम लिमिट ऑफ योर फाइल। So I thought कि उसमें कोई तो एक लिंक रहेगा कि BLK1 and BLK2 have some sort of a link कि वो लिंक आपका सीरियल नंबर है, वो जो लिंक आप पूछ रहे हो ना, दैट इज सीरियल नंबर 0 1 2 3 till 80. So every block has a serial numbers. First block number 0, second block 2 1. तो फिर मेटाडेटा में तेरा 3 things ना, ब्लॉक 1, लोकेशन। हाँ वो सीरियल नंबर भी आता है, बहुत अदर दूसरी चीजें भी हैं, जैसे रेप्लिकेशन फैक्टर, में भी बहुत सारी चीजें कवर नहीं की हैं, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स। बट जो ब्लॉक को लिंक करना है उसके लिए एक सीरियल नंबर है, स्टार्ट फ्रॉम 0। सर ये डेटा नोड के अंदर ब्लॉक फाइल होते हैं क्या? हाँ आपका एक्चुअल फाइल होगा ना। नहीं मींस सर अपन ने ये डेटा नोड अभी 10 TB का एक उसका साइज कैपेसिटी है। सपोज आपका लैपटॉप 10 TB का है, तो आपके लैपटॉप को मैं एक डेटा नोड बना देता हूँ, ठीक है? ओके। और एक लैपटॉप किसी और का पकड़ लेते हैं, 2 लैपटॉप 2 डेटा नोड हो गए। मेरा मशीन नेम नोड है, मैंने बाहर से डेटा इंपोर्ट किया, किसी क्लाइंट ने मुझे डेटा भेजा। सो मैं जब फाइल के पार्ट्स बनाऊंगा 80 फाइल्स, तो 40 फाइल्स आपके मशीन पे स्टोर करूंगा, 40 फाइल्स आपके किसी दूसरे लैपटॉप पे स्टोर करूंगा, अगर 2 ही डेटा नोड है। You got the point? यस सर, वो समझा सर मेरे को, लेकिन हाँ। ये डेटा नोड के अंदर ये ब्लॉक फाइल्स होते हैं, ऐसा है? मींस ब्लॉक फाइल मतलब ये नॉर्मल फाइल है तुम्हारा, जो सिंपल जो फ्लैट फाइल बोलते हैं वैसी फाइल्स है ये, उसको आप कैट भी कर सकते हैं। ओके सर, ओके। कोई वो सिस्टम फाइल नहीं बना रहे, ब्लॉक फाइल मतलब सिस्टम फाइल नहीं है कोई, नॉर्मल फ्लैट फाइल्स है। ओके सर। और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाके सेव होगा, कहीं भी सेव नहीं होगा, उसका एक प्री डिफाइंड पाथ रहता है हर मशीन का, डेटा नोड का, उसमें जाके वो फाइल सेव होती हैं, कहीं भी जाके सेव नहीं हो जाएंगी। दैट पाथ इज कॉल्ड DFS पाथ। तो सारी फाइल्स एक जगह लिखी जाती है, मतलब एक फोल्डर के अंदर मिलेंगी आपको हर मशीन के अंदर, उसके अंदर सब डायरेक्टरीज बनती हैं, बट मेन फोल्डर एक ही रहता है उसके, दैट फोल्डर इज कॉल्ड DFS फोल्डर, DFS पाथ। Is it clear or not clear? Still, I think so. There are a lot of questions you must be having. What is name node? What is data node? What is block ID? Block ID सर, और ये आपने बताया था 80 फाइल्स जनरेट होगा,
तो ये अपना डेटा नोड्स जो है ये 40 रहेगा कि 80 रहेगा? 80 रहेगा ना? क्यों रहेगा? 40 नोड्स है तो मैं अचानक मशीन क्यों बढ़ाऊंगा अपनी? 80 नोड्स क्यों करूंगा? हाँ, मीन्स एक एक डेटा नोड में 2-2 फाइल्स हाँ कॉपी हो आराम क्यों जाएंगे रह या? सकती है ना, बिकॉज 10 TB का डेटा स्टोरेज है ना मेरे पास। ओके आप सर। अपने लैपटॉप के एक ही फाइल रखते हो अपने पूरे लैपटॉप पे, मल्टीपल फाइल रखते हो? मल्टीपल। तो आप एक मशीन पे बहुत सारी फाइल रख सकते हो ना, मैंने तो खाली 2 फाइल रखने को बोला है। सपोज टुमारो यू गेट 120 फाइल्स, तो आपको 3-3 फाइल भी रखनी पड़ सकती है। यहाँ पे वो मल्टी कोर प्रोसेसर काम करेगा। इफ यू हैव मल्टी कोर प्रोसेसर यू कैन प्रोसेस 3 फाइल्स पैरेलली, नहीं तो फिर आपको साइकिल में प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। मतलब सर यहाँ पे जो फाइल्स के बेसिस पे जो आईडी क्रिएट हो रहे हैं, ब्लॉक आईडीज। हाँ नहीं, ब्लॉक आईडी के बेसिस पे फाइल नेम दिया जा रहा है। ओके। पहले ब्लॉक आईडी एलोकेट होता है, उसके बेसिस पे फाइल नेम बनता है, BL_1, BL_2। ये रैंडम होता है, अपने आप नेम नोड अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ नेम नोड अपने। सर ये इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल रहती है अपने को या? हाँ वो एक्सेस कर सकते हैं, ये ब्लॉक मेटा डेटा ना। यस सर। हाँ वो क्लाइंट मशीन से एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी अगर फाइल का मेटा डेटा चाहिए तो अपने को मिल जाएगा। अपने को ये भी मिल जाएगा कौन सा IP एड्रेस पे कौन सी फाइल स्टोर की हुई है, वो पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा मेटा डेटा, सीरियल नंबर, ब्लॉक नेम, IP एड्रेस सब मिलेगा। तो मैं सिर्फ IP एड्रेस की और हम एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी कम अगेन, कैन यू रिपीट? आपने कहा IP एड्रेस मिलेगा तो उससे हम एक्सेस कर सकते हैं IP एड्रेस से? नहीं, क्लाइंट कैन नॉट इंटरेक्ट विद द डेटा नोड डायरेक्टली। मतलब आप क्लाइंट पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि मैं डेटा नोड से बात करूं डायरेक्ट। नेम नोड के पास है। हाँ, जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है क्लाइंट ओनली इंटरेक्ट्स विद द नेम नोड, बाकी वो प्रोसेस फॉलो करने वाली बात है। यू कैन नॉट टॉक टू द क्लाइंट डायरेक्टली। बट मैं अपने सिंगल नोड क्लस्टर पे मैं आपको दिखाऊंगा ये फाइल्स इंटरनली खोल के। आई विल ओपन अप देम एंड आई शो यू। जो one of the participant was saying that last column मेरा दूसरे फाइल में चला जाएगा, so same thing I'm going to show you because I'm using my own cluster, single node cluster, तो उसमें मुझे डेटा नोड का एक्सेस है, but in real time or in real world application nobody will give you access to a data node. But you are very right that if you are using a structured data, so that last line can be split into 2 parts. That is very much possible. Any more questions till now? I won't proceed till everyone is clear on this concept, name node, data node. Try to understand, think and tell me. If you are not able to understand even a small thing, you can ask me n number of times. सर ये क्लस्टर मेंबरशिप क्या होता है? उधर लिखा हुआ है क्लस्टर मेंबर तो ये है ना, नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, डेटा नोड, these are all members only. दो दैट येलो बार जो है ना उधर, वो क्या है? वो क्लस्टर मेंबरशिप। This is one cluster ना, this is आपका एक पूरा क्लस्टर है। ये आपका पूरा एक डेटा सेंटर में रहेगा क्लस्टर, नेम नोड, बैकअप नेम नोड, डेटा नोड्स। So this is one cluster. तो क्लस्टर के सब मेंबर्स है, नेम नोड, डेटा नोड, सेकेंडरी नेम नोड, these are all members of your cluster. तो ये सर नेम नोड का स्टोरेज कभी एक्सीड हो सकता है सर? हाँ, फिर आपको नया नेम नोड लगेगा, उसको बोलते हैं नेम नोड फेडरेशन। क्योंकि नेम नोड ये मेटाडेटा not only it stores in your disk, it also stores in the memory RAM for faster access. So that is a limit of number of name nodes one name node can handle. अगर exceed हो गया तो आपको फिर 2 नेम नोड लगेंगे। सर मतलब वो मास्टर नेम नोड हमेशा RAM में रहता है या सिर्फ जब उसको कोई क्वेरी या कुछ बोलता है क्लाइंट तभी आता है? नहीं, ऑन मतलब सर्विस तो ऑन रहेगी। मतलब आप what you are trying to say, I'm not able to get your point. You said that the name node stays in the memory also, अपना disk no metadata. This metadata is also kept in the RAM.
So does it stay always in the RAM? Yes, sir. It is always in the RAM, because otherwise anyone who wants to access it, it will try to access it as much as possible, faster access now. Otherwise it has to read from a disk. That will take too much time. So that's why we keep two name nodes if your one name node gets saturated. If your one name node gets saturated, we can have another name node in our system. सर लेकिन ये जो 40 जो है ना सर नेम नोड नोड्स डेटा नोड्स, अगर उसमें से अगर कोई एक डाउन हो जाए तो हाँ, दैट आई हैव नॉट स्टार्टेड येट, उस पे मैं अभी आया नहीं, उससे पहले एवरीथिंग इज क्लियर. यस सर. आई हैव नॉट टच अपॉन नोड फेलियर येट. सो दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. हर कोई नोड फेल होता है. इफ अ नोड फेल्स हियर, सपोज दिस नोड फेल्स. So now out of 80 files, I'll be able to access only 78 files. Should the system allow to me access 78 files and continue the process? Can we process 78 files if I lose 2 files in my system? Yes, sir. Or how do you know which part of data you have lost? How can you process that file? That file is now corrupt file. कौन से part आपका loss हुआ है, किसको पता वो? First line, suppose first line उड़ गई आपकी. So इसको data को replicate करके भी रखते हैं. So that is the next question. ना मेरा first question ये है कि if I am losing 2 files, can I use 78 files to process my data? Will I be able to work? No, sir. Answer is no. Your data is only applicable or usable unless you have all the part files, all 80 files. Now let's take one example. 1 TB को अगर आप store करेंगे ना, it is going to create 8,192 files. If you divide 1 TB by 128 MB, these many files will be created. उसमें से एक फाइल भी अगर ब्लॉक फेलियर हो गया या नोड फेलियर हो गया, एक फाइल पे भी आपका पूरा डेटा करप्ट हो जाएगा. You cannot use that data anymore. So this is a basic fault in our system. Okay. Anytime any node can fail, any block can fail. And we have to overcome this scenario because you cannot control this. कोई भी node fail कभी भी हो सकता है. So what is the solution? As you suggested, anybody else? So what is the solution, guys? क्या उसका रास्ता है? Data replication. Data replication. So should I go for node replication or should I go for file replication? File. Node replication will be very expensive. हर node को replicate करना, that means 40 machine के सामने 40 machines और लगेंगे आपको. That is very expensive. So what happens? Let me clear this screen. Suppose you had a file of 300 MB. And this file got split into 128, 128, and 44. Suppose one file is here, 128. Second is here, 128, 44 here. So this is first copy, right? Now in replication, we create 2 extra copies. And this 128 can be replicated here. And the third copy can be created here. Similarly, this 128 can be replicated here and the third copy can be created here. Similarly, 44 can be replicated here and here. So what are we doing? We are creating total number of copies 3 for each file, for each block. And this is my default replication factor, RF3. 3 does not mean 1 plus 3. RF3 means total 3. For every single file, we are generating 2 more files in the system. Now, why we are generating total 3 files, that we'll learn later on. But this is how the replication happens. So let's see how the replication takes place in a cluster. You can see this one slide we have.
where we have one name node and there are 8 data nodes, right? You can see here. One name node and 8 data nodes. Now name node is also responsible for holding your file system, all the directory path and all that. So what is this folder called in Unix? / root folder. Root folder, right? This is root. These are your folder names or directory names, and this is your file name. See, and I told you in Unix we can have file without extension. So my file is a file name. Now this file has 2 blocks. So certainly this file is more than 128. Agar less than 128 hota to ek hi block banta. So let me ask you, suppose the main file name is size is 100 MB. इस फाइल के कितने ब्लॉक बनेंगे? एक ही बनेगा, वो यही साइज रहेगा. और 200 MB के कितने ब्लॉक बनेंगे? 2. So 128 and 72. So let's assume that ये फाइल भी 200 MB का है. And we are splitting this file into 2 parts, 128 and 72. And both of them got unique numbers, see 1 and 3. So system have given some number 1 and 3 to both these block IDs. And see where the blocks are written, the files are written. This file is called BLK_1. And see this file is written here, BLK_3. So one part file is here, second part file is here. And see the replica here. 2 more replicas on 2 different nodes or 1. सर वो जो रेप्लिका रहते हैं उनका ब्लॉक आईडी सेम रहता है कि सेम फाइल नेम भी सेम रहेगा ना, उसका ब्लॉक आईडी क्यों चेंज करेंगे? ओके, पूरा सेम, एग्जैक्टली सेम, खाली वो अलग मशीन पे रहेगा. कैन वी हैव द सेम ब्लॉक आईडी ऑन द सेम मशीन? पॉसिबल है? नो सर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिस्टम भी अलाउ नहीं करता एंड देयर इज नो बेनिफिट. सो इट हैज नो लॉजिक बिहाइंड. क्योंकि पूरा मशीन क्रैश हुआ तो दोनों फाइल चले जाएंगे. So this never happens. So you can see here, every replica is created on other machines, other nodes. 3 को भी देखो आप, ब्लॉक आईडी 3 को, एक कॉपी यहां पर है एंड थर्ड कॉपी यहां पर है. Now what is the advantage of this replication? Now if you lose this node, is your data lost for my file? Tell me. No, sir. We can still access the data from other machines. This is what we are intending to by replicating. We are not losing the data now in spite of losing a machine, because you cannot guarantee that every machine should be working. That nobody can guarantee. These are all commodity hardware, and we cannot use very expensive hardware like Oracle database. Then your cluster will be very expensive, because we use commodity hardware. And in commodity hardware, any machine is vulnerable. Any machine can be, any machine can fail anytime. Is it clear now, replication concept and the file system maintained by name node? So this file system is maintained for how many? For one cluster only. Huh? Kalko we add another 100 nodes. Still we will be maintaining only one file system for one cluster. So this file system is for entire cluster, not for name node machine. Because this cluster is like working like one big unit, one single machine, one logical machine. Hello? जी सर. Anybody has any question?
Still you're on any part which is not clear, let me know. सर वो सेकेंडरी नोड का एक बार फिर से बताओ। सेकेंडरी नोड बैकअप नेम नोड है, वो मैं अभी तक मैंने उसको मतलब उसके बारे में कुछ बताया नहीं आपको। इट्स अ बैकअप नेम नोड, इट्स अ बैकअप नेम नोड, उसके बारे में आई हैव टू टेल यू समथिंग लेटर ऑन। ओके। Because right now we are still discussing name node and data node. But one thing you must have observed very important, अगर name node आपका stop हो गया, if your name node stops, then your entire cluster activity stops. What do you say? No. Yes. But there is Yes. a secondary node. सेकेंडरी नोड नहीं, अगर secondary name node नहीं है तो Yes. for a Yes. timing, Yes. for a timing, Yes. you imagine there is no backup name node. क्योंकि कोई भी आपको अगर फाइल रीड करना है ना, आपको नेम नोड अप्रोच करना पड़ेगा। सपोज आपने abc.file अपलोड कर दी, पहले राइट कर दिया, आपको रीड करना है उसको। So you don't have the metadata information. You will give the file name to the name node, or name node से you can return the metadata. Then you can start reading those blocks जहां भी डेटा स्टोर है। So लिखना है और रीड करना है, whatever if you want to read or write, without name node assistance you cannot move ahead. So name node works like a single point of failure. Remember, it's very important. If your name node stops, your entire cluster stops. So your name node should be always in a running state. For that, we have backup name node, which I'll be discussing later on. So are you clear now the importance of backup name node, why backup name nodes are required? Yes, sir. Because name node हमेशा running state में होना चाहिए. It should be always in a running state. If your name node stops, your entire cluster activity stops. You will not be able to read, write, process, कुछ भी नहीं कर पाओगे. So that is very important. Now here we understood the replication factor that we are using RF3. So if I were to store 1 GB data, so how much actual space I'll be occupying? 3 GB. 3 GB, right? So we are using 3 times of the space, remember. So whenever you're defining your cluster and you want to plan your data storage, let me ask a question that I've been asked to store 1 TB data with replication factor 3, 1 petabyte. 1 petabyte of actual data with RF3. My RF factor is 3. Right? And my data node capacity are 1010 TB. So how many data node will I require? हर data node की capacity 10 terabytes है. So 3000. सर ये वाला थोड़ा सा वापस समझाना सर, समझ कौन सा वाला? 3000 ये जो आपने 1 GB 3 GB वाला बताया था 1 टेराबाइट। देखिए, when I am replicating this file, तो मैं 3 फाइल नहीं बना रहा हूं एक फाइल की, तो 3 गुना स्टोरेज यूज कर रहा हूं ना हर फाइल के लिए। हर ब्लॉक को मैं 3 बार कॉपी कर रहा हूं टोटल, भले एक ब्लॉक है या 5 ब्लॉक है, इसके 2 ब्लॉक हैं, तो हर ब्लॉक को मैं 3 बार रेप्लिकेट कर रहा हूं। तो अगर मेरा फाइल का साइज 200 MB है, तो 128 के मैं 3 ब्लॉक बनाऊंगा, am I right?
128, 128, 128, 72 के 3 ब्लॉक बनेंगे। थ्री नंबर 72 को दिया, राइट? 72 MB। टोटल डेटा कितना हो गया आपका? 600 MB हो गया। इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया? 600 हो गया। सो 1:3 का रेशियो हो गया, बिकॉज 3 times वी आर रेप्लिकेटिंग। सो कोई भी एक्चुअल डेटा होगा उसका 3 गुना डेटा विल बी ऑक्यूपाइंग ऑन द क्लस्टर। क्लियर के नहीं क्लियर? सर So now I have a question for all of you. We have 1 petabyte of data to be stored, and my data node capacity is 10 TB. So 305, 307. Okay, you are very close by. Anybody else? All of you agree with him? 309. Yeah, almost clear. You are nearby. 1 PB is equal to what? 1024 terabytes into 3. So this will give you 3076 TB. Divide by 10. So the right answer is 308. See, total data is 1 petabyte is 1024 terabytes, right? Into 3. So total occupancy will be requiring 3076 terabytes. Divide by 10. So minimum you would need 308 machines. But in actual terms, you need more data. You need more machines. Whenever you buy a laptop, you're not storing entire data. You're storing some system files also. So plus 15% you have to add 15%, 10 to 15%. Am I right, everyone? Yes. Yes, sir. You just buy a laptop of 1 TB. Can you store 1 TB, entire 1 TB on it? No. No. You get 90%, around 900 GB. Because that 100 GB goes to some system files, Windows systems, all those system files, it is occupying. Some data you have to leave for processing. So maximum you can use 90%. So here also we have to give 10% for Unix files, Java files, Hadoop files, because on her machine pay, we are storing Unix file system plus Java we have to install. Hadoop packages we have to install. So all these machines, on all these machines, these basic software are installed, Unix, Java, Hadoop. Then only you can work on those machines. And plus you have to leave some space for IO operations. You cannot just make it 100%. Because in IO operations, you require some physical disk space to read and write data. So you can add another 40 machines, 30 machines here. So basically around 340 machines will be requiring of 10 TB each to store 1 petabyte of data. That is how you decide. Okay, 1 petabyte of data we are storing like this. Okay, fine, everyone. This calculation is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Now let's take another example. We have a machine here name node, and we have certain metadata. Name is file.txt. And you can see that this file has metadata dn1, dn2, dn3. So in every machine, there are two files, right? Now in every setup, how do name node knows that these data nodes are working or not working? Nishad, can you be muted?
So how do we know that these machines are working or not working? How would name node know? We are sending a heartbeat signal here. From each data node, we are sending heartbeat signal to the name node. So that will understand that your data nodes are working. And these heartbeat signals are sent after every 3 seconds. Now imagine there's one of the machines fails, this DN3 fails. And after number of tries, this DN3 is unable to connect to name node. So it is now a dead node, you can say. So immediately what name node will do, it will delete the metadata from the metadata list for DN3. Because it cannot use this node anymore further. This node is down. So whatever data we have created for that DN3 has to be deleted. Now in this example, we have reduced our replication factor from 3 to 2. So I have a question for all of you. Should I continue with 2 replicas, or should I go and create the third replica immediately? You should create a third replica. Okay. Anybody has a different point of view? So the best answer is to create the third replica. Otherwise, what happens if I don't create the third replica? वो भी फेल हो जाएगा. जो बचे हुए 2 हैं वो भी बारी बारी से फेल हो गए तो क्या करेंगे आप? Suppose if I lose DN2 after some time, and after some time I lost DN1 also. Then in spite of having 3 replicas, I've lost everything. So what's the point in creating a replica? So replica is only important if they are updated or maintained. So what will your name node do? It will instruct the existing data node, and it will tell the data node to create replica on the new machine. And this metadata will be updated now, DN5 or 4, whatever number it has. And you are back to 3 replicas. So maintenance of replica factor is also important. Otherwise, if you start losing one replica at a time interval, a point of time will come that you may lose all the replicas. So what's the point in having that? Is that okay, everyone? Yes, sir. So we can take a halt today right now at this point. If you have any questions, we can take all the questions right now. सर ये जो रिप्लिकास होती है, जो अपना Hadoop क्लस्टर है, उसी में से कुछ नोड्स अलग से होती है क्या, जो रिप्लिकास मेंटेन करती है, या फिर अलग से एक क्लस्टर बनाया जाता है? नहीं, वही क्लस्टर में काम हो रहा है, अलग से कोई क्लस्टर नहीं है. अच्छा. उसी क्लस्टर में we are creating extra files on other nodes. ओके सर. मैंने दिखाया ना आपको यहाँ इस पेज पे, एक मिनट देखिए. वही क्लस्टर पे रेप्लिका अलग मशीन पे बन रहा है ना. दिस कॉपी इज हियर, 1 कॉपी इज हियर. मतलब उस क्लस्टर्स में कुछ नोड्स मेंटेन करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी कॉपी कर सकता है वो नेम नोड. पूरा आप देखो ना, पूरा बैलेंस है क्लस्टर. हर मशीन पे 2 फाइल हैं. हाँ सर. तो ऐसा नहीं है कि ये मशीन खाली रेप्लिका के लिए है, ये मशीन ओरिजिनल फाइल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा. और एंड लेट मी टेल यू, ये 3 रेप्लिका में कोई भी ओरिजिनल नहीं है, तीनों ओरिजिनल है. सो प्रोसेसिंग के टाइम पे हम कोई भी फाइल यूज कर सकते हैं. इट इज नॉट लाइक दैट दिस इज ओरिजिनल एंड दिस आर डुप्लीकेट्स. नो, ऑल 3 आर ओरिजिनल्स. So if I want to process, I will be able to process any of the replica. All are equal for me. कोई ऐसा उसमें वो नहीं है कि एक ओरिजिनल है 2 डुप्लीकेट है. There is no duplicate formula here. मतलब सर किसी को भी प्रायोरिटी मिल सकती है? हाँ, वो एक्चुअली प्रायोरिटी मिलती है बैंडविड्थ से. जो नजदीक रहता है वो प्रोसेस का, उस पे प्रोसेस होता है. जो क्लाइंट के नजदीक रहता है, सपोज दिस इज माय क्लाइंट लोकेशन,
So I will process this one. I will not process this. ये बहुत दूर है मेरे से. So I should be able to process this block instead of processing one from here. और दूसरा client यहाँ पर है suppose. उसके लिए ये block नजदीक है. So bandwidth or the nearest block, whichever nearest is the client, we are using that block for processing. Okay, sir. And all three are variables. Yeah. सर एक फाइल की 3 रेप्लिकास होती है ना, तो एक फाइल डेड, एक फाइल नहीं, एक ब्लॉक की, डेड, एक ब्लॉक की. हाँ, तो एक ब्लॉक की, एक ब्लॉक एक्चुअली एक फाइल ही है, बट जो मेन फाइल की बात कर रहे हो क्या ब्लॉक फाइल की बात कर रहे हो? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल. ब्लॉक फाइल की, तो ब्लॉक फाइल की 3 कॉपी बनेंगे टोटल. हाँ, वो एक डेड नोड में चली गई, वो तीसरी आपको क्रिएट होती है कि नहीं? वो नेम नोड डिसाइड करता है ना. मैंने बताया ना आपको, जैसे एक नोड क्रैश हो गया आपका, तो ये मेरा डेटा खत्म हो जाएगा DN3. हाँ. तो अभी आपके पास 2 रेप्लिका रह गए. तो रेप्लिका उसी मशीन पे तो नहीं बन सकता ना, अलग मशीन पे बनाना पड़ेगा. तो आपको नेम नोड इंस्ट्रक्ट करेगा डेटा नोड को कि क्रिएट न्यू रेप्लिका ऑन अ न्यू मशीन. उसी मशीन पे रेप्लिका बना सकते हैं क्या? ANC नहीं, पॉसिबल नहीं है. उसके लिए आपको नई मशीन, मतलब एक्स्ट्रा मशीन चाहिए. अगर एक्स्ट्रा मशीन नहीं है तो आपको फिर वो फाइल अंडर रेप्लिकेटेड दिखाएगा, अंडर रेप्लिकेटेड वार्निंग के साथ. Suppose you don't have any extra machine, so that file will be called under replicated. और वो वार्निंग यूजर को हमेशा बताता रहेगा that you have to do something, add a new hardware. Yes. Because we cannot replicate the same block on the same node. That is not possible. So we need an extra machine or a new machine which can be replicated. सर ये अंडर रेप्लिकेटेड स्टेटस जब रहता है ना, ये स्टेटस, तब वो फाइल एक्चुअल में मतलब उस वक्त कहाँ पर रहती है? फाइल तो सिस्टम में ही है ना, यहाँ पर डेटा नोड 1 एंड डेटा नोड 2 पे. नहीं, लेकिन वो तो सर मतलब DN3 जो है सर, वो तो अभी डाउन हुआ है ना, तो वो खत्म हो गया, डाउन हो गया तो डेड हो गया. वो रीयूज नहीं हो सकता. वो तो DN3 के अंदर सर जो फिर जो फाइल है सर, फिर वो सब वो आप डिलीट करनी पड़ती है. वो आपको मतलब दैट इज यूजलेस ना. वो डेड, वो एक बार आपका नोड डेड हो गया ना, उसको आप रीयूज भी करेंगे ना, तो वो दैट विल बी टेकन अप एज न्यू नोड. You cannot reuse our same files again. That is not, वो पूरा डेड नोड मतलब एक नया नोड की तरह आपको यूज करना पड़ेगा. और जो भी फाइल्स उसके अंदर है उसको आपको मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा. सो उसको क्लीनअप प्रोसेस बोलते हैं. एक बार डेटा नोड आपका मतलब सिस्टम से हट गया, डिस्कार्ड हो गया, तो सिस्टम में लाने के लिए आपको फ्रेश नोड ही लगेगा. क्योंकि सपोज 5 मिनट तक आपका सिस्टम में नहीं रहा, तो 5 मिनट में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे. तो क्या गारंटी है वो डेटा नोड में उस जो डेटा उसकी वैल्यू है, कोई वैल्यू है नहीं, कोई वैल्यू नहीं. और वो डेटा मेटाडेटा से भी निकल चुका है, तो उसका रेफरेंस भी नहीं है नेम नोड के पास. इट इज एन आइसोलेटेड नोड. आइसोलेटेड नोड की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है. वैल्यू डेटा नोड की जब तक है जब तक उसका इन्फ्रेंस रेफरेंस मेटाडेटा में है. अगर उसका रेफरेंस मेटाडेटा से निकल गया तो वो डेटा नोड तो इज लाइक एन आइसोलेटेड नोड. क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते उसको. आर यू एबल टू गेट दिस पॉइंट? रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट. यस सर. अगर वो रेफरेंस चला गया मेटाडेटा से, देन दैट नोड इज बिकम आइसोलेटेड. उसका कोई मीनिंग नहीं है. दैट इज लाइक अ डंप नोड, अ डेड नोड. We can only use it as a new fresh node. So we have to delete all whatever files were there. वो files भी अगर पड़ी रहेंगी तो कोई मतलब नहीं है. That is like wastage of memory space. So better we clean up all that data node, make it a fresh node, and then we use it in a cluster. हेलो सर. Yeah. हाँ, जो सर अभी जो नोड जो हुआ है वो डेटा नोड 3 वो
स्टार्ट हुआ है तो जो नया नोड बनता है वो कितने टाइम में बनता है, विद इन साइकिल? बनता है मतलब आपको फिजिकल ऐड करना पड़ेगा ना स्ट्रक्चर, फिजिकल मशीन ऐड करना पड़ेगा ना मशीन को, बनता कोई तो अपने आप कैसे बन जाएगा वो सिस्टम खुद ऐड नहीं करेगा कि ये नोड फेल हो गया तो? सॉरी, सिस्टम अपने आप कैसे मशीन को ऐड करेगा? ये आपको, ये तो वी हैव टू डू इट ना एज अ पर्सन। सर हर टाइम वो वॉच रखना पड़ेगा कि हाँ, तो आपको क्लस्टर में कितना नोड्स बनाने हैं आपको, वो पूरा आपको मैनेज करना पड़ता है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। दैट इज रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, that is where administrator comes into play. अगर मशीन्स आपकी फेल हो रही है एक एक करके, then you have to do something. सर ये अपना, सर ये अपना अभी डेटा नोड जो 3 है वो क्रैश हो गया, मतलब उसका डेटा ये चला गया, लिंक टूट गया उसका, तो वो अपने को समझता है क्या, मीन्स कि ये 3 नंबर का ये हो गया है कि 4 नंबर का ये होगा? हाँ, तो उसका जो भी रेफरेंस मटेरियल है मेटा डेटा पे वो डिलीट हो जाएगा अपने आप। ओके, DN3 का जो भी मेटा डेटा नेम नोड पर है वो अपने आप डिलीट कर देगा, और उसमें जितनी भी फाइल्स थी DN3 पे वो दूसरी नई मशीन पे रेप्लिकेट होनी चाहिए तुरंत। तो उसके लिए सर अपने को डेटा नोड एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा उसमें तो? हाँ, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे नोड्स होते हैं, आप खाली 3 नोड पे काम थोड़ा करोगे यार, आपके क्लस्टर में कम से कम 10-15 नोड होते हैं ना। यस यस। तो आप खोलिए 3 मशीन का क्लस्टर थोड़ा बनाने वाले हो। सो कम से कम आपके पास 10-15 मशीन होंगी तो, बट नेचुरली यू कैन कॉपी दैट डेटा टू अदर नोड्स। तो सर वो बाद में मेटा डेटा में आ जाता है क्या? हाँ, वो बिकॉज वो ब्लॉक रिपोर्ट जाता है ना उसको, जैसे हार्ट बीट सिग्नल के साथ ब्लॉक रिपोर्ट जाता है। ओके, सो इट गेट्स अपडेटेड ऑटोमेटिकली। और ये हार्ट बीट्स का जो काम है वो नेम नोड का रहता है? नहीं, ये डेटा नोड भेजता है नेम नोड को आफ्टर एवरी 3 सेकंड्स। इट्स अ प्रोग्राम, एक्चुअली इट्स अ प्रोग्राम। ओके ओके। हार्ट बीट अगर नहीं भेजेंगे नेम नोड को, नेम नोड विल नेवर कम टू नो दैट आपका नेम नोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, because any data node can fail any time. That is the objective. तो नेम नोड को फुल इंफॉर्मेशन रहना चाहिए कि कौन सा नोड काम कर रहा है, कौन सा नोड नहीं काम कर रहा है, because on that basis only you are updating a metadata. किसी क्रैश नोड का मेटाडेटा रख के क्या मतलब है, कोई मीनिंग है क्या? इट हैज नो मीनिंग। कोई नोड क्रैश हो गया, उसका मेटाडेटा मैं अगर संभाल के रखूंगा तो क्या मतलब हो, उसका मैं नोड यूज ही नहीं कर सकता फ्यूचर में। Is that fine, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Today at this place. So I'll meet you tomorrow at 6 o'clock. Sir, it is not possible earlier. Earlier तो नहीं है अभी, सैटरडे को अर्ली होएगा, सैटरडे को तो we will do it in day time only. Okay, sir. Thank you. But weekday में एक्चुअली मेरा ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं डे टाइम में। Okay, sir. I understand. But शनिवार सैटरडे we can do it in the day time. Saturday and Sunday. Yeah, Sunday is off. Sunday is off ना, एक दिन तो आराम करने दो यार। Okay, okay, sir. We have to work all 5-6 days here. ठीक है? Yes, sir. I'll see you on tomorrow. Tomorrow at 6 o'clock. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Yes, sir. Good night. Yes, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, sir.